You're welcome. Yeah. All right. Everybody in the house. Everybody in the house. किसको ब्रेक चाहिए? नहीं मिलेगा ब्रेक. नहीं मिलेगा ब्रेक. नहीं मिलेगा. We are going to go so deep today. And कल तो मैं फिर भी थोड़ा, I was feeling a little tighter today. I'm a lot more relaxed. I'm wearing my Batman bloody t-shirt. We are going to go Army Gang OP. Everybody. Are we still waiting for more people or are we done? Okay. So here's what we'll talk about today. Okay, let me do the ceremonial web presentation of slides, because the stupidest thing in the history of things is a slideshow. Anyway, so you know the game rules, right? Have a pen and pencil with you at all times. Write your notes. If you want to see what brilliant notes look like, go to Twitter. There's some guys, I'm forgetting their name. I think one of them is Abhinav, one of them is Ronak, and there's a bunch of other guys who've put out great notes online. Bro, brilliant. That's how you learn, because when you write it yourself, your mind registers it. Monkey, you're a monkey. Monkey ko samajh kuch nahi aata hai. Monkey see, monkey do. Monkey do, monkey learn. Okay. The second thing is have a notebook, because where else will you write? And that is why I tell people write, don't type. It's more in sync with nature in a way to learn. Have a water bottle. I have two. I always have water bottles. We'll play the deep shallow game. Throw your deep and shallow at me. We'll take breaks. Today it is not. कल हमने दो स्टोरीज कवर करी थी बेसिकली. एक न्यूरोट्रांसमीटर वाली स्टोरी कवर करी थी हमने, और एक हमने स्टोरी कवर करी थी कल evolution वाली. Those were the two major stories we'd cover today. But today, or yesterday, today what we'll do is we'll cover, how do I say, we'll cover many small stories. And so we might have breaks here and there, 2-minute break, 3-minute break, this, that. Because the purpose of breaks is not to let you relax, but to let you think by yourself. So we might have to play around. I'll feel it out. And again, brownie points for application-based questions. We'll sit after the session and take your questions. I'm sorry, there is so many people. Sometimes taking questions is hard. That's why I came in earlier today. Tomorrow I'll try and come in the morning also. 1 घंटा आगे questions ले लिए. ठीक है? Okay. Is everybody ready? Say Army Gang OP and then we'll go. Today we'll do social psychology and cognitive psychology. And well, it says how we interact with the world and how we think, but you'll realize very quickly what psychologists study is how we interact with the world poorly and how we think poorly. These questions about how we behave and how we think are so complicated, so infinitesimal. जैसे किसी ने सवाल पूछ रहा, थॉट आता क्या कहां से है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है. हमारे पास थोड़े बहुत मॉडल्स होते हैं. We have some models, and some of those models are bloody brilliant, because you haven't put those things together. Even if you instinctively know, तुम्हें मन में पता है ये हो रहा है, but you haven't put those things together yet. You haven't been like, oh my god, ये तो मेरे को हमेशा से पता था, but language नहीं थी इसके लिए. Which is like one of the most common responses to my content. Thank you for giving me language for this. Right? So call me an imperfect model of how the world works. I don't know. But with cognitive psychology also, you'll realize there is so many imperfections that are more interesting to look at than the perfections. Right? And so we begin our story. Actually, this is very interesting. Okay. And before that, we'll talk about how experiments are done as well. Right. So, ये 8 words तुम्हारे लिए important होने वाले हैं. But before we look into these 8 words, here is something interesting we'll do. We'll talk about how a bloody experiment comes to be. Right? How do people even conduct experiments in psychology? What is this magical thing that they do? जैसे experiment हो गया, science बन गया. उससे पहले तो मेरे को भी कुछ पता है माइंड के बारे में. ओहो, फलाने आदमी की किताब भी पढ़ी थी, उसमें भी कुछ माइंड के बारे में लिखा था. सब लिख देते हैं फिलोसॉफिकली, योर माइंड इज अ ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स अ मिरर, इट्स अ ब्ला ब्ला ब्ला. हाउ डू वी वेरीफाई दैट? हाउ डू वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू? क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन का पर्पस क्या है? ट्रूथ और फॉल्स बताना. किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है. राइट? And with physics, if I take a very reductive, simple example, not that physics is that reductive or simple, it's very easy, right? मेरे को figure out करना है. Please, I appreciate you guys. अब सिर्फ टेक्स्ट पे मेरे को सिर्फ डीप या शैलो दिखना चाहिए और कुछ नहीं, है ना? ठीक है. So the idea is very simple. अगर मेरे को फिजिक्स में कुछ मेजर करना है, ग्रेविटी में, मैंने क्या करा, ऊपर से एक पत्थर फेंका, पत्थर का मास लिया, ठीक है, देखा पत्थर ने नीचे कितनी जोर से उसकी फोर्स पकड़ी, और F = ma फॉर्मूला में डाला और देखा भाई एक्सेलरेशन कितनी आती है. एक बहुत ही सिंपल और रिडक्टिव लेवल पे बता रहा हूं, बट द पॉइंट इज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो. पत्थर फेंकना था, ऊपर से हाइट मेजर करनी थी, ठीक है, मास पता होना चाहिए पत्थर का कितनी जोर से जमीन पे लगा, सारी मैथमेटिकल वैल्यू एक फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर आ जाएंगे. एंड देन यू रिपीट इट ओवर एंड ओवर टू बी लाइक, ये सही था ना, मैंने ठीक तो किया ना, डिड आई गेट दैट राइट? ओके.
With psychology, it has to be done slightly differently because तुम पत्थर नहीं हो. तुम जो करते हो उसमें कोई फोर्स ऑफ नेचर के सिंगुलर लॉज नहीं है. एक कोई कांस्टेंट नहीं है जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. It's not that mathematical, you're very random. But how random exactly, they ask. How random? So, okay, we've got to measure it. How do we measure it? Well, let's make an experiment. Let's make an experiment. The first thing you do when you make an experiment is come up with an idea. The idea is, अगर मैं रात को ढंग से नहीं सोया तो मेरा कल एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा. मेरा ये हाइपोथेसिस है. तो वैभव मेरे पास भागा भागा आया. मैंने बोला वैभव मैं रात को नहीं सोऊंगा तो मेरा एग्जाम कल सुबह अच्छा नहीं होगा. वैभव बोलता मैं नहीं मानता. मैंने बोला देख ले, मैं रात को नहीं सोता, कल एग्जाम देने गया, कम मार्क्स आए. वैभव कहता है इससे क्या बात प्रूव हुई? हो सकता है तेरे कम ही मार्क्स आते हो. मैंने बोला अबे ये क्या बात हुई? मैं तेरे को करके दिखा देता हूं. अगले हफ्ते का एग्जाम सो के जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे. मैं अगले हफ्ते का एग्जाम सो के गया, अगले हफ्ते का एग्जाम दिया मैंने, बड़े अच्छे मार्क्स आए. वैभव कहता क्या पता ये एग्जाम ईजी हो. ऐसे तो हम कुछ पता ही नहीं लगा सकते. तो हमने एक तरीका बनाया. We came up with a brilliant idea. And the idea is, we create two groups generally in psychology to experiment with. One of them is the experimental group. क्योंकि हम चाहते हैं कंडीशंस इन दोनों के लिए सेम हो. सेम ही टेस्ट दें. अलग अलग टेस्ट देंगे तो कैसे मेजर करेंगे भाई हम? और अलग अलग हैं तो किसी सेंस में इतने सेम होने चाहिए कि हम सेम चीज मेजर कर रहे हैं. आज हिस्ट्री का दिया, कल ज्योग्राफी का दिया, सेंस नहीं बनता. आज इस चैप्टर का दिया, कल उस चैप्टर का दिया, सेंस नहीं बनता. तो कल को मैं और वैभव दोनों टेस्ट देने जाएंगे, सेम टेस्ट, और हम दोनों जाएंगे तब जब सामने वाला बोलेगा ये दोनों एक ही औकात के लोग हैं. मैं अगर इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाए, ये दोनों 90% वाले बच्चे हैं. इनमें से एक को सोने नहीं देंगे और एक को सुला देंगे, और अगले दिन टेस्ट करा लो, देख लो. पर कोई बोलेगा फिर यार ऐसा भी तो हो सकता है वैभव की उस दिन किस्मत खराब रही हो सकता है वैभव उस सब्जेक्ट में 90% वाला बच्चा ना हो सकता है कि कोई और वजह हो, फलाना वजह हो. हाँ बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है. ये बड़ी वैलिड क्रिटिसिज्म है कई बार जो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स की होती है. बट एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का तरीका एसेंशियली ये है. पहले एक हाइपोथेसिस जनरेट होती है. ये मेरा आइडिया है, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज द इफेक्ट आई एक्सपेक्ट. Then we build a contraption around it. We build a experiment around it. And the experiment is, भाई हमें कंपेयर करके ही मिलेंगे रिजल्ट्स. कंपेयर करके ही मिल सकते हैं रिजल्ट. दो ग्रुप बनाओ, दोनों ग्रुप में बच्चे डालो जो एवरेज आउट कर दे एक दूसरे की एबिलिटी. तो हमें पता है इस ग्रुप की एवरेज 75% है, इस ग्रुप की एवरेज 75% है. इन दोनों को बैठाओ टेस्ट में, एक को सोने मत दो, एक को सोने दो, और फिर रिजल्ट्स कंपेयर करके बोलो कि नींद ना आने से इतना ड्रॉप देख रहे हैं ऑन एवरेज बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस में. ये है बेसिक स्ट्रक्चर एक एक्सपेरिमेंट बनाने का. कोई मैजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है. तुम डेली लेवल पे कर सकते हो. तुम्हारे दो दोस्त जो सेम से हैं उन्हें सेम कंडीशन में डाल दो. एक के में एक कंडीशन और कर देना, एक के में एक कंडीशन और कर देना. दो कंडीशन करोगे तो बता नहीं पाओगे किस कंडीशन की वजह से क्या चेंज आया. एक कंडीशन और एक कंडीशन और फिर देखो डिफरेंस क्या है रिजल्ट्स में. इस कंडीशन का ये इंपैक्ट है. आंसर आ गया, राइट? And so these terminologies to understand experiments is very interesting and very important. The first thing you need to know is what is an independent variable and what is a dependent variable. These are terms we give to the very experiment I just described. Within our experiment जो भी हमने बनाया नींद वाला, उसमें independent variable वो है जिसको हम चेंज करेंगे. नींद, कितनी नींद देंगे कि नहीं देंगे, जो हमारे कंट्रोल में है एज एक्सपेरिमेंटर. डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से चेंज हो गया. एग्जाम का रिजल्ट सिंपल. मैंने यहां से नींद का बटन कम किया तो वहां से एग्जाम का रिजल्ट भी कम आ गया. डिपेंडेंट वेरिएबल. एक्सोजेनस वेरिएबल वो है जो वैभव पॉइंट आउट कर रहा था कि ये भी तो वजह हो सकती है, ये भी तो वजह हो सकती है, ये भी तो वजह हो सकती है. तो जब हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं बाय नेचर टू अंडरस्टैंड अ 1:1 रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, 1:1 रिलेशनशिप, हम बाकी सारी कंडीशंस को बराबर रखने की कोशिश करते हैं.
द वर्ड फॉर दैट इज सेटरस पैरिबस, अगर किसी ने लॉ पढ़ी हो. हम सैनिटाइज करते हैं रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड को, कि सिर्फ एक ही कंडीशन से देखें हमें और कोई कंडीशन बीच में ना है. फिर हमने दो ग्रुप बनाए. एक वैभव का ग्रुप था जब बच्चे जिसमें सब सोए जाके, उसका नाम है कंट्रोल ग्रुप. उसका मतलब है हम कंट्रोल करके डिफॉल्ट बिहेवियर देखेंगे, इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ये हमारा बेसलाइन है, उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. फिर एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके साथ हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. मेरा ग्रुप जिसको सोने नहीं दिया गया. उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है उसमें हम दो चीजें टेस्ट करते हैं, एक एक्सटर्नल वैलिडिटी और एक इंटरनल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी ये कहती है भाई जो तुमने एक्सपेरिमेंट में सैनिटाइज करके कंडीशंस बनाई, क्या ये रियल लाइफ में होती भी हैं या तुम हवा में बना रहे हो? क्या ये रियल लाइफ में होती भी हैं? एंड यू विल फाइंड इनसेन अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो ट्रांसफरेबल नहीं है, बिकॉज तुमने इस लेवल पे सेटरस पैरेबस लगा दिया, लाइफ वो है ही नहीं. Very often, like one criticism I'll tell you, very often in studies of psychology, they give you money to make decisions. If you make this decision, you get this amount of money. If you make this decision, you get this amount of money. Real life में कोई तुम्हें decision making के लिए पैसे नहीं देता. That's a question on the external validity. क्या तुम्हारा experiment export हो भी सकता है बाकी दुनिया में कि नहीं? Criticize करेंगे भाई, देखेंगे ना क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या होता है रियल लाइफ में ऐसा जैसा एक्सपेरिमेंट में हुआ है. और फिर एक होता है इंटरनल वैलिडिटी, कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ है भी आपस में रिश्ता, कि तुमने बस दिमाग खराब मैथमेटिक्स लगा दिया इस पे. लाइक मैं बोलूं नो फैप की वजह से आदमी सक्सेसफुल होता है, राइट? कोई रिलेशनशिप है भी नो फैपिंग का और सक्सेस से, या क्रिस्टल्स रखने का और सक्सेस से? कोई रिलेशनशिप लॉजिकली है भी? कोई लॉजिकल टाई है भी, पर तुम ये कह सकते हो जो आदमी नो फैप रखता है वो आदमी बहुत ही सेल्फ रिस्ट्रेंट में विश्वास रखता है, या जो आदमी क्रिस्टल्स रखता है वो आदमी बहुत ही सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. उस वजह से वो कॉन्सियंशियस हो गए, या उस वजह से वो और इंडस्ट्रियस हो गए, और इस चक्कर में वो और सक्सेसफुल हो गए. तो तुम इंटरनल वैलिडिटी बिटवीन क्रिस्टल्स एंड नो फैप एंड सक्सेस कोई नहीं है. तुम्हें बात करनी है फिर इंडस्ट्रियसनेस की. क्या रिलेशनशिप है इंडस्ट्रियसनेस और सक्सेस का? सो समटाइम्स यू विल सी दीज इफेक्ट्स and you read about it, one glass of wine helps heart, this that bullshit. But there is so many exogenous variables or hidden variables, exogenous meaning external variables. Sometimes there is no internal validity, sometimes there is no external validity. So a lot of these studies that come on, और ये तो मैं बचपन में पढ़ता था यार, हिंदुस्तान टाइम्स के एक पेज पे आती हैं साइंस के, तब बचपन में जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था बहुत सारी स्टडीज आती थी ऐसी. Drinking a glass of wine can make your heart healthier, and even then I'd be like, how the hell does that even make sense? क्या मैकेनिज्म है वाइन पीने से मेरे हार्ट की हेल्थ का? What is the mechanism? Explain that. तुमने एक कोरिलेशन दिखा दिया. दो डेटा सेट पकड़ो, कभी भी कोरिलेशन दिखा सकते हैं. किन्हीं भी दो डेटा सेट में कोरिलेशन निकाल सकते हो तुम. मतलब नॉट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है मैथमेटिकली वो, बट किसी किसी चीज में भी कोरिलेशन दिख जाते हैं यार. और होता क्या है, whenever you see correlation in nature, whenever you see correlation, मतलब कोई और नीचे एक फैक्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. There is something else that you need to look at when there is no internal validity. जैसे कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. फॉर इंस्टेंस, जो आदमी सिगरेट पीता है उसके पास गाड़ी होती है. एक्चुअली बात यह है, जो आदमी सिगरेट पीता है उसके पास सिगरेट पे फेंकने को पैसे और गाड़ी फेंकने को पैसे हैं. समझ रहे हो? या फिर एक, दिस इज अ नोन फैक्ट आई थिंक स्टेटिस्टिकली, कि smokers generally tend to be poorer than non-smokers. Like the richest people, they don't smoke. And the idea is, तुम सिगरेट पियोगे तुम गरीब हो जाओगे. No, no, no. There is no internal validity between them. There is a hidden variable, and the variable is, जो आदमी अपनी जिंदगी को सिगरेट के नाम पे उड़ाने को तैयार है, वो जिंदगी में वैसे कुछ नहीं करना चाहता. वो उसकी कॉन्सियंशियसनेस पे बात आ रही है. तो तुम स्टडी करोगे कॉन्सियंशियसनेस एंड सक्सेस, नॉट सिगरेट स्मोकिंग एंड सक्सेस. This is the makeup of all your experiments ever. So for instance, let's see how like drugs are tested, drugs being medicines are tested, right? हम क्या करेंगे, मेरे पास एक मैजिकल दवाई है जिससे आदमी की आईसाइट बेटर हो जाती है, राइट? अब हमें एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आईसाइट, सॉरी, दवाई देना, दवाई का कितना डोज है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आईसाइट बेहतर हुई कि नहीं हुई. कंट्रोल ग्रुप क्या है?
वो जिनको दवाई मिली ही नहीं, जिनको हमने शुगर पिल पकड़ा दी, प्लेसिबो दवाइयां देते हैं हम कि शुगर पिल खा लो और मन में सोच लो तुमने दवाई खाई है, तुम्हें बताया नहीं है हमने शुगर पिल थी कि दवाई थी, अब देखते हैं तुम्हारा अपने आप मन मन में कैसे ठीक होते हो तुम। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? जिसको हमने नई दवाई दी उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? क्या हम इस दवाई को बाकी जनता को दे सकते हैं, या ये दवाई अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, जो हम लोग एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जो हमने क्रिएट कर रखा है वहीं पे काम कर रही है। और इंटरनल वैलिडिटी क्या है? इस दवाई का आईसाइट से कोई लेना देना है भी? क्या मैकेनिज्म है इसका ऑपरेशन का? क्या करता है ये तुम्हारे ऑसिपिटल लोब में? कैसे तुम्हारी आईसाइट, जो आईज के अराउंड मसल्स हैं उनको स्ट्रांग करता है? That is all experiments ever. These are the 7 terms you need to know. In fact, when we study placebo, and do you guys know what placebo? Do you understand placebo? When we study placebo, which is how much has your mind healed you, that is an exogenous variable. So we need to remove it. So when we finally come up with answers, we'll be like, experimental group की eyesight improve हुई 7 points से, और control group की eyesight improve हुई 3 points से. तो दवाई का इफेक्ट एक्चुअली 4 है. हमने एक्सोजेनस वेरिएबल निकालना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के रिलेशनशिप को निकालने के लिए. तुम किसी भी क्वेश्चन को, क्या जैसे इसमें लिखा है कॉफी पीना और स्लीप एंड दिस दैट. सपोज कॉफी पीने से रात को नींद नहीं आती, टेस्ट करना है, अगले दिन कॉफी मत पियो, आज कॉफी पी लो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जो हम चेंज कर रहे हैं? कॉफी पीना है ना पीना. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नींद आई कि नहीं आई टाइम से. कंट्रोल, इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, हम खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो कंट्रोल सिचुएशन क्या है? जिस दिन मैंने कॉफी नहीं पी. एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्या है? जिस दिन मैंने कॉफी पी. एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? क्या मैं ये रोज अपनी जिंदगी में कर सकता हूं? हाँ, ये तो एक्सपेरिमेंट मैंने किया ही रियल लाइफ में, एक्सटर्नली वैलिड है. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है वो, बाय द वे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं एक्सपेरिमेंट्स को कैसे लॉजिकली समझना है एवरीडे टर्म्स में. इंटरनली वैलिड है. हाँ, कैफीन की वजह से कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, कॉर्टिसोल की वजह से वेकफुलनेस रहती है. अगर वेकफुलनेस रहेगी तो मेलेटोनिन रिलीज नहीं होगा, तो नींद नहीं आएगी. लो, खत्म. दिस इज ऑल एन एक्सपेरिमेंट. इज लोगों ने इतना मैजिक बना रखा है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, राइट? दिस इज द मेकअप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एंड वी कैन स्पेंड सम टाइम, लाइक आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट नो पॉइंट, बट लाइक हम लोग ये हाइपोथेसिस सेटिंग, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सोजेनस वेरिएबल्स, इसको मैंने डिटेल आउट कर रखा है, आराम से स्लाइड पे देखते रहना. अब हम सोशल साइकोलॉजी पे आते हैं, और आई विल ट्राई एंड रिमेंबर टू आस्क यू गाइज वंस इन अ व्हाइल कि तुम्हें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ताकि तुम थोड़े अपने टोज पे रहो. बट अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी की. क्या आप लोग रेडी हैं? यहां तक समझ में आया सबको? राइट, ब्रिलियंट. इफ यू फिगर्ड आउट व्हाट एन एक्सपेरिमेंट लुक्स लाइक इन वन गो, यू गाइज आर सुपर स्मार्ट. आई एम सो प्राउड. सुपर स्मार्ट. वाह 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 सर, वाह वाह, वेरी गुड. ओके, वैलिडिटी समझाऊं? इंटरनल वैलिडिटी समझाऊं? ओके, वैलिडिटी सबको समझ नहीं आया. तुमने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसमें 2 लॉजिक टेस्ट करने हैं. एक तो इस एक्सपेरिमेंट में जो मैं चीज चेंज कर रहा हूं यहां पे, जैसे एक पतंग समझो, मैं पतंग को नीचे खींचता हूं, पतंग नीचे आती है. मैं पतंग को ढील देता हूं, पतंग ऊपर जाती है. मैं एक मैनिपुलेशन यहां करता हूं, वहां एक चेंज आता है. मैं एक मैनिपुलेशन यहां करता हूं, वहां एक चेंज आता है. कल को मैं ये सोचने लगूं, जैसे कुछ लोग होते हैं पत्ते खेलते हुए बोलते हैं ना, अगर मैं अपने सर पे टैप करूंगा मेरे पत्ते अच्छे आएंगे. इसमें लॉजिक क्या है? पतंग का तो समझ में आ रहा है, डोरी है ना, डोरी खींची यहां से तो वहां पुल आया, डोरी छोड़ी यहां से तो वहां पुश गया. ये इंटरनल वैलिडिटी है कि इन बात का कोई लॉजिक भी है आपस में कि नहीं है. और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब यह है कि भाई ये रियल लाइफ में सिचुएशन लग भी सकती है कि नहीं लग सकती. क्योंकि कई बार तुमने एक सिचुएशन, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा बनाया जो सिर्फ लैब कंडीशंस में ही ट्रू है, क्योंकि तुमने इन ट्राइंग टू सैनिटाइज द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमनेस, you've taken out the essence, you've taken out life की reality. एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं? बाकी सारी कंडीशन सेम रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं डोरी खींची तो नीचे आया, डोरी छोड़ी तो ऊपर गया. Is internal validity about finding correlation or causation? Most of what you find in psychology is correlation. The cause is unknown. Almost always the cause is unknown. एक्सोजेनस वेरिएबल मतलब एक्सटर्नल चीजें. फॉर इंस्टेंस हम मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और मैंने एक्सटर्नल और एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में एक में लड़के डाल दिए, एक में लड़कियां डाल दी. अब मैंने एक वेरिएबल अकाउंट फॉर ही नहीं करा ब्रो कि जेंडर डिवाइड हो गया है. क्या पता जेंडर इफेक्ट कर रहा हो हमारी स्टडी के रिजल्ट को. वो एक्सोजेनस वेरिएबल है. अच्छा, एनीवे, नो मोर.
बस 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 बस. No, we're not going to talk about stats. No more texting. Okay? Now we'll talk about conformity studies. And this is where we start a discussion on social psychology. And the reason why social psychology is called social psychology, you'll find out so many ways. इनके नाम देने के जो processes है ना, they're not very smart. ये नाम एक ट्रेंड की तरह आते हैं. और of course these names mean something. But it's not like social psychology मतलब लोग आपस में कैसे बात करते हैं. Social psychology is how do you interact with the world outside. And that may mean people, that may mean just like जो हो रहा है आसपास उसको कैसे समझना है. And you'll also find that social psychology and cognitive psychology has a serious overlap. क्योंकि इसमें डिफरेंस ऐसा नहीं है एक लाइन बनी हुई है ये प्लॉट तेरा वो प्लॉट मेरा. द डिफरेंस इज तुम्हारी अप्रोच क्या है, तुम पढ़ना क्या चाह रहे हो. सोशल साइकोलॉजी में तुम पढ़ना चाह रहे हो कि हम अपनी दुनिया को कैसे परसीव करते हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तुम पढ़ना चाह रहे हो हम अपनी दुनिया को जो परसीव कर रहे हैं उस परसेप्शन को प्रोसेस कैसे करते हैं. सो very often there is a very strong overlap between these things. And almost no class, जैसे अगर तुम कभी भी इकोनॉमिक्स की क्लास लोगे ना किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में या किसी भी अच्छे इंसान के पास, वो तुम्हें 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा. Because that is the moment all of us realized, well, capitalism can be bloody broken. So it is an imperative, it is an unignorable fact in our theory to study this practical phenomena. It's an unignorable reality. You cannot complete the theory of capitalism without mentioning what happened in 2008. Just exactly like that, you cannot mention the nature of human beings as good. We are all good on the inside without mentioning Nazism, without mentioning Genghis Khan, without mentioning the historical warfare and violence we've always been a part of. You cannot. Much like you cannot say log are all bad because you cannot ignore all the great and good and like people who've lived for other people. Mother Teresa, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Che Guevara, whatever you want to choose. Revolutionaries or terrorists, whoever is your hero. So it is almost easy to accept इंसान अच्छे हैं, but इंसान बुरे हैं is something that a few people got very obsessed about thinking after World War II. You have to understand, World War II, we were coming off a time when we'd experienced two great, insane wars within one generation. जिन लोगों के बाप World War I में लड़ रहे थे, उनके बच्चे World War II में लड़ रहे थे. एटम बम फट रहे थे, आज तक हम उनकी कॉस्ट भुगत रहे हैं. इंडिया ऑलमोस्ट हमारी हिस्ट्री में World War II इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो कॉलोनियल रेवोल्यूशन ये सब वो सब हो रहा था. हमारे यहाँ कहते सोल्जर्स भेज दिए फाइट करने, जाओ फ्रांस में फाइट करो, यहाँ वहाँ. हमारे लिए उसकी हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ अराउंड World War II, mad and nobody got it because initially people didn't believe कि Nazis actually Jews को ऐसे मार रहे हैं. It's hard to believe कि सब लोग मिलके कह रहे हैं हम मारो इनको. So Americans won't believe it, the English won't believe it until the Germans came knocking. And then they were like, oh my God, what is this? And then they fought. And once the war was over, there were a lot of intellectuals, smart people in universities, professors who were like, hua kya ye? What the hell happened? Or like, is everybody in Germany bad? Ye hewan hai kya sare? Which is the common explanation we'll give about, say, China doing it to the Uyghur Muslim population or like, you know, जहां भी हम जिस चीज से भी dissatisfied रहते हैं आजकल politically, हम क्या बोलेंगे? ये तो बुरे लोग हैं, ये तो ऐसा करते ही हैं. But some people were smarter than just thinking कि यार ये नाजी है, ये साले बुरे ही होंगे. Some people were just more careful about that thought. They were like, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये सब बुरे होंगे. क्या हुआ exactly? ये पढ़ने के लिए तीन इंटरेस्टिंग स्टडीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और इन तीन लोगों के नाम हैं सोलोमन एश, फिलिप जिम्बार्डो and Stanley Milgram. And you have to understand, 2 out of 3 of these studies can never be repeated because they were done in a time when the American Psychological Association had no ethical guidelines. So they were real experiments. Ab to you've softened the experiment. Ab you can't hurt the people who are being experimented, you know, which is a good thing overall. But back then, these guys were crazy. They were like, we'll run an experiment. So we'll start with what Milgram tried to study. Milgram ran this beautiful bloody experiment. Think about the genius of coming up with something like this. He's like, हम एक काम करेंगे, हम 2 लोगों को बुलाएंगे.
एक इंसान को बिठाएंगे एक चेयर पे जिसपे उसके हाथ पैर पे करंट के नोड्स बांध दिए जाएंगे जिससे उसे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगा, और एक इंसान को बिठाएंगे हम कंट्रोल पैनल पे। मैं एज एन इंस्ट्रक्टर खड़ा हूंगा साइड में। मैं इस इंसान को, कंट्रोल पैनल वाले इंसान को बोलूंगा, सुन, चेयर वाले इंसान को करंट दे। हम पहले इनको रूल दे देंगे, बता देंगे 120 वोल्ट से ऊपर करंट दिया तो मर सकता है, 400 वोल्ट से ऊपर करंट दिया तो ये हो सकता है, फलाने फलाने जो भी रूल्स, लिमिटेशन, स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी दे देंगे, बता देंगे इनको मुंह से, और फिर इनको बोलेंगे करंट दे। बट इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट ये था कि जो आदमी चेयर पे बैठा है ना, वो एक्चुअली मिला हुआ है एक्सपेरिमेंट में, वो एक रैंडम इंसान नहीं है। ये बात एक्सपेरिमेंटर को पता है, उसको पता है, पर जो कंट्रोल पैनल पे बैठा है उसको नहीं पता। और उसको कोई रियल करंट दिया नहीं जा रहा। वो जो कन्फेडरेट एक्सपेरिमेंट में वो होता है जो मिला हुआ होता है, उस कन्फेडरेट को कोई करंट एक्चुअल नहीं दिया जा रहा, वो एक्टिंग करने वाला है शॉक खाने की। यहां पे कंट्रोल पैनल वाले आदमी को क्या लग रहा है, मेरे को तो बात माननी है एक्सपेरिमेंटर की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम किस पे कर रहे हैं, जो चेयर पे बैठा है उस पे। बट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किस पे हो रहा है, जो कंट्रोल पैनल पे बैठा है। एंड मिलीग्राम वांटेड टू सी, अगर मैं इसको बोलूं बढ़ा करंट, तो ये कब तक बढ़ाएगा करंट, कब तक ये अपनी फुल प्रेजेंस, full actual presence of body and mind in his perfect reasonable self will put the other person through extreme pain, even to the point of death, because this person on the control panel is convinced कि मैं वो कर रहा हूं. This is what Milgram was trying to study, and Milgram was bloody crazy because a lot of the people who walked out of the experiment, जो कंट्रोल पैनल पे बैठे हुए थे, जो एक्चुअली जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, they were emotionally traumatized after this. The reason was, when Milgram said करंट बढ़ाओ, every time he said करंट बढ़ाओ, he was surprised to find out कि वो जो बंदा कंट्रोल पैनल पे बैठा है उसका कोई दिल दिमाग है नहीं, वो करंट बढ़ा रहा है। वो तब तक करंट बढ़ा रहा है जब तक चेयर पे बैठे वाला एक्टर पागल होने की एक्टिंग नहीं कर रहा, तो भी वो करंट बढ़ा रहा है। जब तक उससे बोला जा रहा है करंट बढ़ाते रहो, वो करंट बढ़ाते जा रहा है। इवन दो वो सब कर लेने के बाद उसको रियलाइज हो रहा है मैं कर क्या रहा था, उसको प्रॉपर ट्रॉमा हो रहा है, बट उस दौरान वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो करंट बढ़ा रहा है। और मिलीग्राम वाज लाइक, इस पे थोड़े एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। एक केस में उसने क्या करा, अब मैं लैब कोट पहन के खड़ा हूंगा, अब मैं दीवार के पीछे खड़ा हूंगा, अब मैं पर्दे के पीछे खड़ा हूंगा, अब मैं खिड़की के पीछे खड़ा हूंगा जहां मैं दिख सकता हूं बट मैं उस रूम में नहीं हूं, अब मैं खिड़की के पीछे खड़ा हूंगा लैब कोट पहन के। व्हाट इज ट्राइंग टू टेस्ट इज अथॉरिटी आदमी के दिमाग के साथ क्या करती है, एंड द रियल आंसर इज आदमी अपना आदमी होना बंद कर देता है। दैट्स व्हाट ही फाउंड आउट। He's like, लोग बुरे या अच्छे नहीं होते, लोग अथॉरिटी को ससेप्टेबल होते हैं, लोगों की वल्नरेबिलिटी है अथॉरिटी। अगर लोगों ने एक बार किसी को भगवान मान लिया, किसी को अपना डॉक्टर या किसी को अपना एक्सपेरिमेंटर या किसी भी सर्कमस्टेंस में मान लिया, तो वो उसकी बात मानने के लिए प्री डिस्पोज हो गया है। ऐसा नहीं था कुछ लोगों ने मना नहीं किया, कुछ लोगों ने मना किया, बट ओवरवेलमिंगली लोग हाँ बोले। व्हेन ही ट्राइड ऑल दीज अदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जहां लैब कोट पहना है, the shock waves went up. People were more willing to say, okay, we'll burn this guy with the current. When he hid behind a wall, people were less likely to say yes. What he found was authority, और अगर तुम्हारे बगल में खड़ी अथॉरिटी है ड्रेस्ड एज अथॉरिटी, तो तुम सारी ही बात मान लोगे। और जितनी दूर है अथॉरिटी, जितनी जुदा है अथॉरिटी, जितनी छुपी हुई है, उतना धीमे धीमे करके तुम्हारा इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस तुम पे कम हो जाएगा। दिस इज स्टैनली मिलीग्राम. And he is the reason why APA, American Psychological Association, came with ethics, because his experiment traumatized the people who were being experimented upon without hurting them. They didn't go through shit. They were not put through current. उनको तो कुछ नहीं, उनको तो सिर्फ एक fake dial move करना है और वो traumatized हो गए. He is the man single-handedly responsible for the Psychology Association being like, क्या हो रहा है? Like, what are we doing? Then there was Philip Zimbardo. And Philip Zimbardo's experiment is very famous as the Stanford Prison Experiment. And the Stanford Prison Experiment is very simple. Zimbardo collects a bunch of students, divides them into two groups, tells them, listen, we are going to play a game. You're going to come to the psychology building ka basement. We're going to make a makeshift prison here in Stanford. Stanford's a university in the West Coast near Palo Alto, California, near San Francisco, right? And what we'll do is that half of you will play guards and half of you will play prisoners. Right? And to make it more real, we'll get you prisoners arrested also. Real police गई, arrest करके लाई, mug shots लिए, वो होता है ना ऐसे फोटो वाला, सब हुआ. And then they put them in these, they got them to the Stanford
साइक लैब के बेसमेंट में, दे पुट देम इन रूम्स एज प्रिजनर्स, दे ड्रेस्ड एज प्रिजनर्स, उनको कपड़े पहना दिए प्रिजनर्स के, गार्ड्स के कपड़े पहना दिए, गार्ड्स को बोला सुनो किसी को मारना नहीं है, कोई वायलेंस नहीं होनी, बट तुम्हें बाकी पूरी आजादी है, कंट्रोल करके रखो, डिसिप्लिन करके रखो, गार्ड्स को डंडे उंडे दे दिए, और जिम्बार्डो खुद बन गया प्रिजन वार्डन, एक्सपेरिमेंट चालू करो। 10-12 दिन बाद जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड वहां आती है साइक लैब में, बेसमेंट में, एंड शी सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड शी इज लाइक लिसन, तूने ये पागलपन बंद नहीं किया ना, तो आई एम गोइंग टू ब्रेक अप विद यू। एंड दैट्स व्हेन जिम्बार्डो वेक्स अप। जिम्बार्डो इज लाइक व्हाट द हेल इज इवन हैपनिंग, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट people have taken their roles way too seriously. Some people have had to be ejected from the study because they were losing their mind. They were getting depressed and angry and raged, and every chance that somebody was getting to punish the other person, they were doing it. The guards to the prisoners, and the prisoners were rebelling like they were actual prisoners. People forgot कि इनकी इसके बाहर कोई दुनिया है. People forgot कि इनकी इसके बाहर कोई दुनिया है भी. And it's mind-boggling. वो गार्ड्स बन गए, वो प्रिजनर्स बन गए. बट हियर इज द किकर, जिम्बार्डो एक्चुअली प्रिजन वार्डन बन गया जब तक उसकी गर्लफ्रेंड बाहर से आके उसको रिमाइंड नहीं करती हो क्या रहा है ये. वो एक्सपेरिमेंटर खुद एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गया, उसको समझ नहीं आया. And these are probably two of the most insane and intense studies in all of psychology. And then there is the third one, which is actually like a small little playing baby in front of the first two when you listen to it. But when you realize what it's saying, it bloody makes you go crazy. This is Solomon Asch. Solomon Asch was a more sober person. Asch is like, listen, we'll do nothing that crazy. We'll do something simple. And here's what he did. उसने एक बोर्ड लिया, उस बोर्ड पे 3 लाइन बनाई. लाइन ए, बी, सी. ए सबसे बड़ी, बी बीच की, सी सबसे छोटी. और ये एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं मैं, उसने कई कॉम्बिनेशन यूज करे ऐसे एबीसी के, जिसमें ए छोटी है, किसी में सी छोटी है, किसी में बी छोटी है, यू नो, प्लेड अराउंड. एंड ही गॉट अ बंच ऑफ ग्रुप्स इन देयर, 10 लोगों के. एंड उन 10 लोगों को ही आस्क्ड, भाई इसमें सबसे लंबी लाइन कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन यार, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई किसी को मारना धाड़ना नहीं, कोई ऐसा रोल प्लेइंग एक्सपेरिमेंट नहीं. बट हिज मैनिपुलेशन वाज वेरी क्लेवर. उसने पहले 9 लोगों को ना कन्फेडरेट बना रखा था. वो मिले हुए थे एक्सपेरिमेंट में. उनको जानबूझ के ये बोलना था कि जो सबसे छोटी लाइन है वो सबसे बड़ी लाइन है. और एक्सपेरिमेंट हो रहा था सिर्फ 10वें आदमी पे, ये देखने के लिए कि ये क्या बोलता है. ये क्या बोलता है? डज ही स्टिल से कि जो सबसे बड़ी लाइन है, ऑब्वियसली सबसे बड़ी लाइन है वो बड़ी है, जो सबसे छोटी लाइन है वो छोटी है. And he ran that experiment in many permutations, combinations. Many groups, first of all, went through this, which is 9 मिले हुए एक जुदा आदमी. फिर उसने एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करा. उसने बोला इन 9 लोगों में से एक आदमी को बोलता हूं सच बोल दे. फिर कितने टाइम जो 10वां आदमी है वो क्या बताता है, ए सबसे बड़ी है कि सी सबसे बड़ी है. देन ही वाज लाइक, जो 10th बंदा जिस पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसको लेट घुसाएंगे और उसको बोलेंगे तू अपना आंसर एक्चुअली लिख के दे दे. तब वो कितनी बार सच बोलता है और कितनी बार वो बोलता है जो बाकी लोगों ने बोला. And here is what they found. They found if 9 people in front of you say, listen, C, जो कि obviously सबसे छोटी लाइन है, उसको पॉइंट करके बोला सबसे बड़ी लाइन है. 10वां आदमी जो एक्चुअली सोच रहा है, चाहे वो कितना भी कंफ्यूज्ड है, is more likely to play the game that everybody else is playing. He'll just agree to public perception. And we have a video from Solomon's experiment, Ash's experiment, in the slides, where जिन लोगों पे टेस्ट हुआ वो कह रहे हैं हाँ मेरे को किसी से पंगा नहीं लेना था तो मैंने बोल दिया. हाँ मेरे को उस टाइम समझ तो नहीं आया, बट सब यही कह रहे थे तो मेरे को लगा मेरे में कुछ गड़बड़ होगा. एंड सो व्हेन दे ट्राइड कि एक बंदा, सपोज 3rd बंदा सच बोल देता है, एंड देन 10th बंदे तक वो आते हैं. 10th बंदा इज मोर लाइकली टू से द ट्रूथ टू, क्योंकि उसको पता है एक और बंदा है जो सच बोल रहा है. He's like, एटलीस्ट हम 2 हैं, अकेला तो नहीं हूं मैं. एंड व्हेन दे फाउंड कि जब उन्होंने टेस्ट किया कि अगर बंदा रिटन में दे रहा है अपना आंसर और बाकी 9 लोगों ने जोर से बोला है, देन दे आर मोर लाइकली टू टेल द ट्रूथ टू, क्योंकि सोशल एम्बैरेसमेंट का कोई डर नहीं है. बट दीज स्टडीज वेंट ऑन टू प्रूव समथिंग इनसेन अबाउट द ह्यूमन कंडीशन. Milligram study told us that we stop
being ourselves. We stop exercising our right and wrong. We stop making sense of the world properly as soon as we are under the control of an authority. This probably is why I hate Gurudom. This is probably why I go after everybody and I tell everybody, don't take a guru. Even gurus I like Osho, don't take him as your guru. If you've ever heard of Jonestown, which was another cult in America, Jim Jones करके एक priest होता था, ऐसे ही कुछ preacher होता था. He started a cult before Osho, did it. Eventually, when they went to Jonestown, the rest of the people, police, they found everybody had poisoned themselves and died. Mass suicide. How does that happen? Mass suicide. Fuck that. How is it कि ओशो के उसमें सब लोग खुला सेक्स कर रहे हैं, कंजर्वेटिव लिबरल जो भी आदमी आ रहा है वो बढ़िया अपना नंगा सेक्स कर रहा है यहां से वहां? How does that happen? Authority. Imagine the dangerous consequences of authority. We see that politically, we see that religiously all the time. That's one. We see that historically all the time too. From Zimbardo, we found out कि वो छोड़ो अथॉरिटी का प्रेशर. अथॉरिटी चाहे भाड़ में. अगर तुमने खुद पे भी एक रोल डाल लिया ना, तुम अपनी इंसानियत भूल जाओगे. तुम उस रोल को जीने में इतने व्यस्त हो जाओगे, तुम अपनी इंसानियत भूल जाओगे. दिस इज पार्टली द रीजन वाई जो लोग, जैसे हम देखते हैं ना, डॉक्टर ने हेल्प नहीं करी, लॉयर ने हेल्प नहीं करी, वो इतना रूड था, मीन था, या कोई काउंटर पे बैठा है उसने बोला बे जाना. तुम अपना रोल जी रहे हो, तुम भूल गए सामने वाला इंसान है, मैं इंसान हूं, ये आदमी वाली इंटरेक्शन है. इनफैक्ट सेलिब्रिटीज वो अपने रोल्स जी रहे हैं. इनफैक्ट यूट्यूबर्स वो अपने रोल्स जी रहे हैं. लोगों ने कन्विंस कर लिया है खुद को कि मैं ये हूं और अब वैसे जिएंगे, और उस एग्जीक्यूशन में कमी नहीं छोड़ेंगे. कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उस एग्जीक्यूशन में. एंड देन विद ऐश वी फाउंड आउट समथिंग वे डीपर. अबे तुम सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग की बात कर रहे हो. तुम विजुअल परसेप्शन में भी फूल हो सकते हो सोसाइटल प्रेशर से. जो तुम देख रहे हो तुम उसको भी सच नहीं मान रहे क्योंकि बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं. इस लेवल पे तुम मैलेबल हो. ये है साइकोलॉजी का डीप लेसन. इस लेवल पे तुम इम्परफेक्ट हो. इस लेवल पे तुम वल्नरेबल हो वायरस तुम्हारे अंदर घुसने के. इस लेवल पे तुम्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है. अब बताओ. That is the grand lesson from the conformity studies, and we study it in the same way we studied 2008 financial crisis. So you remember the many ways in which you can be fooled. The many ways in which stuff is all wrong. It's just hardcore bloody psychology, undeniable bloody experiments. This is as far as conformity studies are concerned. And let's see, let me try and see if we can run through the slides real quick. If there's something interesting we might want to cover. 1 second. Uno segundo. This is Ash. मैंने खान अकेडमी की सबसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस यहाँ डाल दी हैं. आराम से देखते रहना. ये सोलोमन ऐश की स्टडी है जो वो विजुअल परसेप्शन वाली है. ये मिलीग्राम की स्टडी है करंट देने वाली. ये जिम्बार्डो की स्टडी है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट. और ये उसके कंक्लूजन्स हैं. Zimbardo says, you are prone to roles. Even I forgot what is bloody happening. Milgram says, I traumatized people just by being an authority. And they did not even do anything wrong. They just thought they were doing something wrong. Imagine what will they do when they think they're doing something good. Imagine the extent to which they will go. Without their own sense. Because immediately afterwards, people just walked out emotionally stressed. कि हमने क्या किया. But authority. Or Ash, well, even the way I perceive the world is so much influenced by what people around me think. अब बताओ existential crisis हो रहा है कि नहीं हो रहा है? And now we come to Daddy Freud. We'll talk about Daddy Freud now. Freud's insane. We love talking about Freud. We'll go on to a whole different segment in our conversation. But the reason why we spoke about this, particularly the conformity studies, is a warning sign outside psychology. You think you can think. No. You're just susceptible to everybody else's thought. That's the message. You're just like a machine that's open to everybody else's influence. That's the message.
You think you are you? How much of you are really you? How much of it is it a role? How much of it is just you playing out authorities' orders? Or how much of it is just society's pressure? How much are you you? You know? And then what do? How do you become yourself? And that's a separate question. And the answer is, be an individual, think for yourself, reject authority, always question things, remain skeptical, give a big fuck you to roles, because it's not you who wants yourself in a role. Everybody else wants you in a role. There is about 20 people in here who are like, why did Prakhar say fuck? Because I talk like that. Why did I talk like that? Because I talk like that. I'm not going to play the role of I'm not saying this is literally true, but my point is that's how it is. Reject roles, because you don't know when you start playing a role that is not good for you. So be careful what role you get into. Some roles are good. I want to be a father. I'd love to be a father. I'd love to be a brother to so many people. Sure. And then, see who's around you. See who's around you. Are they even sensible people? Will they even point at truth and be like, this is the truth? Or are they just scared and only looking after themselves? Who are the people around you? What is the society you live in? Because that inevitably affects how you think about shit. You'll see a bloody murder, and because everybody else says, no, this is an act of revolution and this, that, you'll say this is an act of revolution. You won't see it as a murder. You won't see that guy die as a son dying for a mother. You'll see it as your idea being liberated. That's the point. That is how influenceable you are. And then we found it by doing certain studies. And these studies were so simple. It's kind of scary this happened. Anyway, let's move to social psychology proper. And we'll start with Freud. And you have to understand, Freud is not a scientist. Freud has never been a scientist. Freud was a therapist of a nature. Therapists are not scientists. Some therapists outside this workshop are pretty confused if they're scientists. They're not scientists. Mental health warrior लिख लेने से अपनी Instagram bio में? No. You're probably not even a therapist if you write that, but I don't know. But Freud was not a scientist. Freud was more of a philosopher of psychology. And there's two interesting guys I'll point you to when it comes to philosophers of psychology. One of them is William James. And James is, frankly, the most under-discussed psychological figure. We won't discuss a lot of James today. Maybe like slightly refer to him. But James is type का आदमी था. He tried to study एक moment कितना लंबा होता है. And he sat with a stopwatch to be like, oh, moment pass हो गया मेरे मन में. मैं भी तो एक ही flow of consciousness में था, वो टूट गई, अब एक और flow में आ गया. And he came up with an answer for that. So like, look at how curious and gritty that philosopher was. He's like, I'll figure out what a moment bloody means. And Freud was different. Freud was a bloody crazy maniac, right? Freud supposedly obsessed with sex. Obsessed with sex. You'd think, Prakhar, we've been talking about sex for the last 4 hours in this, and you seem to be obsessed with sex. I am nothing in comparison to Freud. Freud was obsessed with sex. And he was also obsessed with aggression. But more importantly, he was obsessed with cocaine. And why I say more importantly is because I have a feeling the cocaine helped him think in a very weird way. By the way, do not endorse cocaine at all. Not saying drugs are good. Cocaine's probably the worst of them. Bhaad mein jaye drugs. But with Freud, it's an exceptional situation. Because he thought about shit nobody could think about. Not in the time he was thinking about it, not in the place he was thinking about it. He was getting insights into the human mind from talking to people and looking into himself that we now have through years of science. And one of the most fundamental insights that Freud had is called the psychodynamic approach of mind. And the psychodynamic approach of mind is so bloody smart that modern psychology does not even know how to reject it or accept it. The psychodynamic approach you've all heard of is the id, ego, superego triad. We'll discuss that. But the reason why modern psychology cannot accept it or reject it is because modern psychology treats your mind as a black box. It can only study behavior. It can only study behavior. तो वो कहती है तुम्हारे दिमाग में जो हुआ बिहेवियर में दिखाओ क्या चेंज है, कल एग्जाम में क्या रिजल्ट आया. साइकोलॉजी को साइंटिफिकली खुद को कैरी आउट करना है, मैथमेटिकली खुद को कैरी आउट करना है. थॉट्स को कौन मैथ देता है? बिहेवियर को मैथ दे सकते हो. तू 4 मीटर चला, 5 मीटर चला, तेरे 75 आए, तेरे 76 आए. Psychology does not know how to accept or reject Freud. Because Freud said there is a conversation happening in your head. There is a dynamic inside your own psychology.
And we don't know how to mathematize that at all. So we don't know how to experiment around that stuff. There's some experiments, in all fairness. In fact, there's a lot more than some experiments that people have still managed. But Freud was interesting because he said there is an internal dynamic in your own head. And then he pointed unknowingly, knowingly, to modern psychology's fixation with behavior. He's like, bro, too much behavior orientation. What is happening inside the head? That's so much more important. And that's why I love Freud. Because Freud's going directly at the meat. वो कह रहा है छोड़ो ये बिहेवियर से, तो हम बिहेवियर के बाद हम बोलते हैं ये सोचा होगा तभी उसने ये किया है, उस स्टेप को हटाओ, बात करते हैं दिमाग में क्या चल रहा है. And for that Freud came up with a model. And the model is very simple. The model is threefold. The model says there is an id, there is a superego, and this id and superego are talking to each other, fighting with each other, trying to make friends with each other. And that process of talking to each other is the ego. Not to be confused with ego as we understand it on social media. Not to be understood with ego as we understand it as ego matlab main, aham. No, remove that. वो एक separate sense of ego है. उसको हम यहाँ नहीं confuse करेंगे. हम Freudian ego की बात कर रहे हैं. And Freudian ego is this conversation that happens between these two parts of your head. And Freud said, your id, which you almost never are aware of, तुम्हें consciously कभी नहीं पता, वो तुम्हारे unconscious में है. Unconscious, conscious पे भी आएंगे. तुम्हें कभी नहीं पता अपने id के बारे में कुछ भी, वो तुम्हारे unconscious में. वो तुमसे कराता है तुम्हारी basal desires, खाना, sex, violence, गुस्सा, basal desires. और जो सुपर ईगो है, हम कल पढ़ेंगे सुपर ईगो के बारे में इन फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, वो डेवलप होती ही 6 साल के बाद है. वो डेवलप होती ही सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से है. इस सुपर ईगो में सोसाइटी के रूल्स हैं, तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए. And he says between these two things there is forever a conflict. He says, Freud says, आदमी हर समय सेक्स करना चाहता है, not literally, but like he says, आदमी की sexual instinct है, desire है, but society कहती है you need to go through this process, it has to be done in a way that is not animal, you're supposed to be a human when you do it, you're supposed to establish connection, this that. वहां पे एक डिस्टॉर्शन बनती है. आदमी नाराज होना चाहता है, किसी की जान लेना चाहता है, सोसाइटी कहती है ये गलत है, ये वो है, ये वो है, डिस्टॉर्शन बनती है. और वो डिस्टॉर्शन, वो कॉन्वर्सेशन, वो फाइटिंग, वो हार्मनी, जो भी है वो उन दोनों चीजों के बीच का रिलेशनशिप, वो ईगो है. दैट्स व्हाट फ्रॉइड सेज. एंड ही सेज इड तो हमें कभी पता ही नहीं चलता, इड हमारा अनकॉन्शियस है. सुपर ईगो थोड़ा पता चलता है, बट मेजरली जो हम देखते हैं, जो अपने दिमाग में हम कॉन्वर्सेशन सुन पाते हैं, मैं ये करूं कि ये करूंगा, मैं फिर ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो ईगो है फ्रॉइड के लिए. So for Freud, ego is not necessarily a bad thing. It's just the conversation happening in your head. And here is where it gets interesting. Freud says this id works on a pleasure principle. It wants you to find pleasure. Give me more pleasure. Give me more pleasure. Chocolate, sex, alcohol, drugs, food, violence, whatever. Give me more pleasure. But the superego works on the reality principle. Which is, अबे रियलिटी क्या है? मिल भी रहा है यहाँ पे सेक्स, या तेरे को जरूरत भी है शुगर की. And it is this interaction between my desires and my quote unquote, ये desire और जो दूसरा word मैं लूंगा, they're rough approximations, they're not literally true. My desires and my responsibilities, between what I want and what I should do. There is a conflict, there is a conversation, and that conversation is the ego. And if you think closely enough about it, this is exactly the same thing we discussed with nature and culture. You have biological instinct, very similar to food, alcohol, whatever dopamine free hits with drugs, sex. And then there is society's rules. How must you go about it? Marry, then have kids. Or don't drink alcohol. And then there is a conversation between the two. And Freud was incredible in coming up with this, because, well, Freud's talking about all of this 20 years after Darwin, maybe 30 years after Darwin, maybe a little more. But nobody had come up with this kind of a conversation at this point. There was some, हमारे यहाँ पे तो खैर पुरुष और प्रकृति कब से बात हो रही है. But that's the point. Freud came up with it independently. A thought that has been discussed for so many thousands of years in his own way, because he did not say,
कि प्रकृति अंदर है और पुरुष नेचर कल्चर है, ही सेड तुमने कल्चर कुछ लेवल पे अब्सॉर्ब कर लिया है, अपने दिमाग में रूल बुक बना ली है उसकी। वो कल्चर भी तुम्हारा इंटरनलाइज्ड कल्चर है, बाहर नहीं है, सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, वो तुम बोलते हो, वो मेरा खुद पे प्रेशर है। जैसे अभी हम बहुत देर पहले जब वी वर टॉकिंग टू समबडी अबाउट ट्रैवलिंग एंड शी इज लाइक मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, probably that's your super ego talking, probably that's your id, but it sounds like your super ego. Or maybe the conflict is कि you want say travel and whatnot and that's your id, but you should have babies and whatnot, that's your super ego because society's told you that and you've internalized both of them, and now this is a real conflict. You don't know what to do, and what you're experiencing or what you're trying to tell me is your ego. Think about that. Freud came up with that, and he got so much hate. He's very controversial, but he's unignorable. Modern psychology, modern psychotherapy, whatever, still borrows the id ego super ego model, psychodynamic model. They probably don't call it id ego super ego, they'll call it unconscious, subconscious, and conscious, or like whatever, like freewheeling words they give it. But Freud is unignorable. Scientists are probably the only people who can go around shitting on Freud, and these are particular scientists who have nothing to do with Freudian theory, because they're talking about, say, perception and language. That has very little to do with what Freud said. Or like अगर पॉलिटिकल एजेंडा है फ्रॉइड के पीछे, और तुम देखोगे तुम्हें कॉलेजेस में और स्कूल्स में नहीं पढ़ाएंगे फ्रॉइड, बिकॉज फ्रॉइड्स ऑब्सेस्ड विद सेक्स, और हम सेक्स की बात कैसे करते हैं, वहां कल्चरल एजेंडा है. फ्रॉइड्स रियल. He kick-started the entire discipline of psychoanalysis. And psychoanalysis is a form of psychotherapy which it's almost like you're not participating. Like as a therapist, you're not participating. I've sat through a lot of psychoanalytical sessions. I've in fact met a lot of psychoanalysts. Some of India's top psychoanalysts, and it's amazing. They treat your situation so differently from the way psychologists do. Psychologists have a more methodical, scientific approach. Psychoanalysts have a wild approach. They won't say, they'll disappear. They'll let you look at yourself after a certain while, and you'll be like, "Main kya kar raha hu? Why am I doing this?" And it's weird. Psychoanalysis is a whole different thing. But Freud came up with that theory. And he came up with so many more concepts within that. But he's most notably understood in the world of social psychology for coming up with this idea that there is an internal situation in the brain. पहले उसको address करते हैं. And then a lot of you have heard of his student Carl Jung. Carl Gustav Jung. He was Freud's student. And then these guys fought. And they didn't fight like two intellectuals would fight. There was none of that. They didn't fight like a teacher and a student would fight. Okay, we respectfully disagree. Bye. They fought like boys. इनके लेटर्स पढ़ोगे ना लास्ट में, ये बस एक दूसरे को गाली ही नहीं दे रहे, तू चूतिया ही नहीं बोल रहे, बस. बाकी एवरीथिंग एल्स, तेरे को अकल नहीं है, तू कुछ भी बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया. नहीं, तेरे को अकल नहीं है, तू कुछ भी बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया. Two of the most important figures in psychology. Consider that. Supposed to be understanding how the mind works. Shitting on each other, writing letters to each other 15 days later. 15 दिन बाद चिट्ठी आई, चिट्ठी पढ़ी, गुस्सा आया, एक चिट्ठी में मैंने भी गुस्सा निकाला, अब मैं उसको चिट्ठी भेज रहा हूं. And they fought for several reasons, some of which should have been personal, I think, but some of them were intellectual. And that concerns us. We should find out what were these intellectual reasons. One of these reasons, Jung said, is that Freud, don't you think you're a little bit crazy, bro? Why is this need to throw sex in everything? Zaruri hai har cheez mein sex. Because Freud says, in living with civilization, with society, two things that you definitely have to trade off is your sexual instinct and your aggression instinct. Freud was like, society में रहोगे तो तुम्हारी इड का जो सेक्सुअल नीड है वो मरेगा ही मरेगा, और वो तुम्हारे अनकॉन्शियस में कॉम्प्लिकेशंस करेगा. दैट इज द फ्रॉइडियन व्यू ऑफ साइकोथेरेपी. Freud would always weave in sex some way or the other. And this is before evolutionary biology was a thing. Evolutionary psychology was a thing. So like he was on to something there as well. That sex है इन सब चीजों के पीछे किसी ना किसी सेंस में. But Carl Gustav Jung is like, bro, it's too much यार, तू काफी सेक्स की बात कर रहा है. This sounds crazy. He's like, you're obsessed with sex, Freud. You're crazy. This is literally the sentiment of Jung and Freud against each other. And then Jung did something slightly different. Instead of saying the id is unconscious,
and some part of the superego is unconscious, which is traditionally what Freud said. We'll see a diagram of that. Jung's like, bro, अनकॉन्शियस में ये सोसाइटी के रूल्स और तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स नहीं है. अनकॉन्शियस में एक्चुअली स्टोरीज हैं. These are stories you hear, you grow up with. He's like, एक्चुअली यहां पे स्टोरीज भी उसका भी एक डिग्री ऊपर मेटा स्टोरीज आर्केटाइप्स है. तो अगर तुम लायन किंग, हैरी पॉटर, हरक्यूलीज, ये 3-4 स्टोरीज देखोगे, इनका एक ही थीम है. एक बच्चा है, वो सडनली अकेला हो गया, उसके सामने एक मॉन्स्टर है, उसको उस मॉन्स्टर से जीतना है. वो जीतने के लिए किसी के अंडर ट्रेन करता है, फाइनली उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और मुश्किल से डिफीट कर देता है. ही इज लाइक, तुम्हारे दिमाग में ये स्टोरी की स्क्रिप्टें ये फंसी हुई हैं कई कई कई. और then Jung goes one step further because Jung is also not a scientist, he's a mystic. Jung was very interested in Hinduism, Tantra, Buddhism. वो mystic था. Jung takes it one degree further. सिंबॉलिज्म में बहुत इंटरेस्टेड था, ड्रीम्स में बहुत इंटरेस्टेड था. यूंग और फ्रॉइड दोनों ही ड्रीम्स में बहुत इंटरेस्टेड थे. बट यूंग टेक्स इट वन डिग्री फर्दर. इज लाइक, जो ये अनकॉन्शियस है ना, ये तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारी जागीर नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में कहीं है. एक्चुअली हम सबका एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है. हम सब उस सेंस में कनेक्टेड हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, जो हमें पता ही नहीं हमारे बारे में, वो हम सब शेयर करते हैं और वहां से ड्रीम्स निकलते हैं. एंड टू मी यूंग साउंड्स इक्वली क्रेजी, बिकॉज़ वेयर द हेल इज दैट? Where the hell is sex and where the hell is that in my head? Like, show me. But you can't, because these guys are philosophers. They're talking in logic. They're not talking in, well, science. Science needs demonstration. Science needs falsifiability. Science needs what Karl Popper laid out, or for that matter, Thomas Kuhn laid out. And Thomas Kuhn and Karl Popper and now David Deutsch are philosophers of science. And just like that, with everything ever, there were philosophers of mathematics, like Euclid, if you ever remember reading about Euclid. Euclid, mathematician, but also a philosopher of math. Right? All these disciplines need people जो बाहर से लॉजिक को देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं ठीक है तुम बिल्डिंग बनाओ, एक एक ईंट लगाओ, पर ईंट सीधी लग भी रही है कि नहीं. And these guys were sort of that. William James, Adler, Horney. क्या एडलर होर्नी तो फिर साइको एनालिस्ट साइड पे चले गए, बट these guys were philosophers of psychology. And this is the epic battle between Freud and Jung. What is your unconscious made out of? Sex and aggression? Or is it made out of stories and myths? Or is it made out of both? What do you guys think? With that, we'll take 10 minutes. We'll actually take 10 minutes, yeah. And we'll come back. All right? Okay. See you in 10 minutes. Don't worry. When we start again, we'll start with a recap. Don't worry. Take a break. 10 minute बाद मिलो मेरे को 8:27 पे exactly.
Yes, Admi gang, we are still 5 minutes away from starting again. How are you guys liking this? आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है लाइफ में, कि कुछ हिल गया है लाइफ में, ऐसा लग रहा है. It's going to get fun, man. This is going to get fun. This is up, I think, until जो हम लोग सिर्फ लास्ट के एक टॉपिक या दो टॉपिक कवर करेंगे ना, एक टॉपिक, वो इतना फन नहीं है. वो थोड़ा, it is just to inform you of that topic, but up until then all of this is just a ride up, so prepare yourselves. We have Hyder, Shakhtar Singer, Bem, Festinger. Yep, अगला पूरा लूप फेस्टिंगर तक पकड़ेंगे हम. फेस्टिंगर से पहले तक पकड़ लेंगे, फिर फेस्टिंगर पे आएंगे. बस ठीक है, सही है. मेरे को देखने दो चैट में क्या बज रहा है. चैट मेरी आज फिर हैंग मार रही है यार. इतनी स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं ना. कोई कह रहा है ब्रेन हेमरेज. Somebody's like, Freud makes more sense to me. Bro, you should listen to Peterson. He makes a very convincing case for Jung. Now you understand why he's making a case for Jung. Now you understand what he's trying to tell you about Jung. अब सुनना Jung को जाके. Oh, Peterson को on Jung. और Joseph Campbell को on Jung. और who else do I see relying on Jung a little bit more? Sudhir Kakkad on Jung. I've done a podcast with him. Bro, next level. There is a WhatsApp group for this. I don't know. There is a Discord group for this for sure. Discord group पे आ जाओ. Selfish gene, bro, biological है. I don't have to do it selfish gene here. Psychology में I don't have to talk about selfish gene. और वो theories of cooperation और उन सब चीज़ों में आ जाता है जो कि pure biological studies हैं. हमारा काम है psychologically तुम्हें inform करना, तुम्हें बढ़िया मस्त कलंदर कहानियाँ सुनाना. हाँ, there's a movie called Stanford Prison Experiment. You're right. Somebody's like, my life will not be the same after this. I can feel it. Hey, if you guys are loving it, go on to your Twitter, write it down. Be like, my life is never going to be the same after this workshop, and tag me. I'll retweet you guys. If you guys feel that, तभी मैं किसी को बोलूंगा नहीं. Only if you feel it, do it. We'll start in another 2 minutes. कर दो. जो बाहर जनता है उसको पता तो लगे. Where can you read? Bro, अच्छा, as far as research is concerned for all of you guys, now that you know, तुम जाओ विकिपीडिया पे. अब तुम तैयार हो विकिपीडिया के नेट को सर्फ करने के लिए. तुम्हें कभी कभी डायरेक्ट रेफरेंस के लिए पेपर्स पे जाना पड़ेगा या और कहीं सोर्सेज में बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बट जनरली विकिपीडिया पे जाओ, पढ़ो, और जो भी चीज समझना है उस पर क्लिक करो, उसको पढ़ो. अब तुम्हारे पास एक सेम्बलेंस है कि क्या क्या है, किसको किस तरीके से समझना है, क्या सोशल है, क्या कॉग्निटिव है. ये वर्ड्स विल नॉट जस्ट मीन नथिंग टू यू एंड यू नाउ यू नो व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. Okay, here is a book. This is one of my favorite books by Freud, Civilization and Its Discontents. And it's talking about this battle between superego and id, but on a civilizational level. Freud's just great. Then there is a few books by Jung also, but to read Jung is very difficult. Like really difficult to understand Jung. बहुत ही ज़्यादा उसकी language ऐसी है. Alan Watts on Jung. I've never read Alan Watts on Jung. Man and His Symbols ऐसी करके है एक दो बुक, मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी, but I was like, I can't put myself through Jung easily. Does Zimbardo's experiment mean... Okay, everybody back. No more text messages. We'll start again. I'll take this question. Somebody's like, does Zimbardo's experiment also means that man has a need to escape life? No, they're not. Nobody's escaping life. Life is about playing roles. You just got to be careful about what role you're playing. You know? Like Zimbardo's experiment is not about escaping life, but a need for performance that all of us have, because we don't know what to do existentially. We have no idea what to do where. We have no idea what to do with shit. So we are looking for some kind of instruction. We can find it in authority, we can find it in other people, or we can find it in the expectations we have of ourselves. If you enjoy, will you
enjoy academic psychology as well. I mean, sure, it depends on who's writing and who's teaching. I'm sure some element, I'm not saying all of it or even most of it, is the way, I'm putting this information together. Because jaise ab hum dekhenge now, when we go over those slides, it's really not that interesting to look at the slides. So this is just a video on Freud. You should watch it later. I don't want to spend time watching a video, but see, this is the id, the ego, and the superego. Let me share my screen so you just see it better. Paul Bloom will give you a very solid introduction into the science of psych, more comprehensive than I can give in 3, 9, 8, whatever amount of hours. Paul Bloom takes a full semester, which is 2 classes every week, hour and 15 minutes for 16 weeks. So that's 2 hour 30 minutes into 16. That's about 40 classes, 40 hours of, 40 hours. You'll obviously learn a lot more. And Paul Bloom's a legend. So yes, definitely. Anyway, the id says, I need to eat this second. The superego says, eating during an important meeting is rude and inappropriate. And the ego talks between them. You can't do that because you're in the middle of an important meeting. So id says, I want something. Superego says, these are the rules about it. And the ego is like, क्या कैसे settle करें? चुपके से खा लें और खुद को बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर रूल अपने आप पे reinforce करें. I'm sure Coursera will have something as well. Where can we see Paul Bloom? The lectures are all on YouTube. Paul Bloom Intro to Psych, MIT courseware. But trust me, they're not going to be as like, you will really have to be dedicated to sit through those 40 hours. 40 hours is a lot of time. And they won't cover almost all of like this stuff. Probably not, because मतलब मैं अपने तरीके से cover कर रहा हूँ basics. उसने अपने तरीके से cover किए हैं basics. Now, look at this diagram. I want you to pay attention to this diagram right here. Right? This diagram right here with the id, ego, superego, id. See that id is completely unconscious. Completely डूबा हुआ है. Superego का some part is conscious. Most part of the superego is also unconscious. Right? Now there is this place called preconscious, or as we commonly understand, subconscious, which is like almost at the surface of unconscious coming into consciousness. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बोलना चाह रहे होते हैं, जैसे हम कुछ बोलना चाह रहे हो, फ्रॉइडियन स्लिप जिसे कहते हैं, हम कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, कुछ बोल देते हैं, जनरली सेक्सुअल नेचर का कुछ मुंह से निकल जाता है. राइट? वो बेसिकली व्हाट द आइडिया इज कि वो ऑलमोस्ट यहां फ्लोट कर रहा है तुम्हारी प्री कॉन्शियस में, और वो सडनली कॉन्शियस हो गया. या कभी कभी हमारे मुंह से बातें निकल जाती हैं, वो हमारे, या हम कभी कभी सच छुपा नहीं पाते, हम लोगों के मुंह पे ही चेहरा बना देते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं. दैट्स सपोजली इन योर प्री कॉन्शियस. एंड द आइडिया इज सम पार्ट ऑफ योर ईगो इज प्री कॉन्शियस, व्हिच इज द काइंड ऑफ वर्ड्स जो फ्रॉइडियन स्लिप में आते हैं. सम काइंड ऑफ योर सुपर ईगो इज प्री कॉन्शियस. यू काइंड ऑफ नो व्हाट इट इज बट नॉट रियली. Kind of have access to it, but not really. But the rest of it is conscious. And then, Freud, why is he different? First of all, it is the dynamic approach that he brings to the table, which is that दिमाग में एक dynamic चल रही है, आपस में conversation कूदा फांगा चल रहा है दिमाग में. Right? The other thing he says is he's not very scientific. He's more theoretical, philosophical, and literary. Both Jung and Freud are more theoretical, philosophical, and literary. And that's a very interesting perspective on psychology. Then Freud has been super controversial since, because, well, we'll see tomorrow as well. Freud just brings sex into everything. Freud's weird like that. You got to appreciate a man who's weird like that, And then finally, he had, yes, penis envy is one of those examples. And he had unignorable, and the idea of penis envy is kind of like, I don't get it, dude. Freud, you're literally so weird. Okay, no more text messages. No more text messages. My chat hangs up and then I cannot talk to any of you just because some people cannot stop themselves. Please. है ना? We'll pause. We'll take no more text messages. No, actually, no more text messages. Somebody saying Freud's a teenager, but he's not. You'll find कितनी docile और बचकानी approach है आजकल की psychology की. आजकल की psychology क्या कहती है? या तो behavior देख लो, क्या हो रहा है, या आदमी से पूछ लो तू कैसा महसूस कर रहा है. Freud was like, नहीं, मैं दूर से देख के बता सकता हूं. अब एक एंड पे तुम सवाल उठा सकते हो, तेरे को क्या पता, मेरे को पता है मैं कौन हूं. दूसरे एंड पे, मेरे को क्या पता मैं कौन हूं, शायद बाहर वाला ही कोई बेहतर बता दे.
और इसके 50,000 एग्जाम्पल्स हैं। तुम करियर काउंसलर, तुम ठीक है इंटरनेट यूट्यूबर, ये वो फलाना ढिमका, लोगों से पूछना तो जिंदगी में क्या करना है, गुरु साधु संत प्रीस्ट मौलवी, ये सब और क्या है तुम बता दो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर क्या है, right? So it's not really clear. And then he had unignorable insight into the working of the mind, which is very unique because everybody else kind of needs to go through an experimental pathway. He just saw it from the outside. He just saw it from talking to people. Freud was unique like that. And then there is Jung. And he says, listen, एक तो unconscious में है archetypes. Unconscious में sex और वो नहीं है जो तू कह रहा है, aggression. दूसरा, please stop talking about sex so much, Freud. Please. And then finally he says, जो हमारी collective unconscious है, society wide, civilization wide, उसमें अलग ही dreams और symbolism और ये सब वो सब चल रहा है. That is Jung. Jung का एक इंटरव्यू भी आपको YouTube पे मिल जाएगा, where Jung is talking actually. He was alive till 1961, which is Freud died sooner, 30s में कभी. But if you see, this is where we come to end of an hour-long lecture. These were all the slides we covered. That's it. Or whatever, 45-minute long, 4 slides. Right? So it's not a lot. But now we'll talk about how modern psychology has come about to be. And to understand modern psychology, you have to go all the way back to early 1900s and talk about 2 very important gentlemen, one more important than the other. And these gentlemen are called Ivan Pavlov, I think. Pavlov. His last name was Pavlov. I think his first name is Ivan. And B.F. Skinner. And Pavlov and Skinner are the bloody kings of psychology during this time. Skinner more than Pavlov. Skinner was like around the 40s and the 50s. Skinner was God. Skinner was daddy psychology. Everybody was like, Skinner figured psychology out entirely. And let's start with Pavlov. Pavlov's idea was called classical conditioning. Pavlov's idea is very simple. His idea is, and he runs this experiment on his dog, essentially. He's like, मैं कुत्ते को खाना देता हूं, उसकी जीभ में से थूक आती है. अब मैं कुत्ते को खाना देता हूं, घंटी बजाता हूं, कुत्ता खाने को देखता है, उसकी जीभ में से थूक आती है. 5, 7, 8 बार ये चीज रिपीट करूंगा ना, तो मैं घंटी बजाऊंगा, कुत्ते के मुंह में से थूक आनी शुरू हो जाएगी. कि कुत्ते को लग रहा है अब घंटी से खाने का एसोसिएशन हो गया, और खाने का एसोसिएशन था लार टपकने से. तो कुत्ते की घंटी और थूक एसोसिएट हो गई. सिंपल आइडिया. Learning through association. Classical conditioning. But you can be conditioned because one thing that is followed by another thing, the other thing becomes useless after a certain while. You attach all the attributes of that other thing with the first thing. So, maybe you like Instagram because you saw a beautiful person on Instagram once. Maybe 5 times you saw extremely good looking people. Now you just like Instagram. You first like those people. You first liked those interesting people. But eventually you open Instagram, liked interesting people. Open Instagram, interesting people. Instagram, interesting people. Eventually Instagram is equal to interesting हो गया तुम्हारे दिमाग में. Eventually that's it. पहले तुमने देखा आदमी भला है, आदमी के पास पैसा है, आदमी उस पैसे को फिलैंथ्रोपिकली यूज करता है, उससे भलाई करता है. भला आदमी, पैसे वाला आदमी, भला आदमी, पैसे वाला आदमी, भला आदमी, पैसे वाला आदमी. ये 2 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, भलाई और पैसा. इवेंचुअली पैसा भला है बन गया इक्वेशन. So what Pavlov discovered with the dog is that animals, and humans particularly, because humans have symbolic association, but animals also associate 2 or more things and make them one in their head. When we spoke about कल हम बात कर रहे थे ना, कोडेड किसके साथ है तुम्हारा हार्मोन, that is entirely Pavlov telling you, hey, you are conditioned. You are conditioned. That's what Pavlov is telling you. Pavlov's on that. Pavlov figured out that there is, and there is key words that he used. So here are the key terms that he used. He's like, खाना एक unconditioned stimuli है. इसमें हमने कोई कंडीशनिंग नहीं करी है. खाना अनकंडीशनड और एक स्टिमुलस है. उस स्टिमुलस से कुत्ता क्या करता है? रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स क्या है? भूख.
वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, नेचुरल है भाई, अनकंडीशनड है, हमने कुछ नहीं किया अभी। इन दोनों के बीच में मैं एक न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड करता हूं, विच इज घंटी। उस घंटी के साथ कोई रिस्पॉन्स एसोसिएटेड नहीं है, न्यूट्रल है वो। और मैं अब न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ बार बार डालता हूं और नोटिस करता हूं कि कुत्ता अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बार बार करता है, जीभ लपलपाना। इवेंचुअली क्या होता है कि तुम्हें अनकंडीशनड स्टिमुलस की जरूरत, तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं। जो तुम्हारी घंटी, जो तुम्हारी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, वो अब एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गई है। दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ Pavlov's experiment with his dog. This is the technical part of Pavlov's experiment with this dog. And this is where you begin to ask yourself, how am I confusing things in my mind? Because the dog, देख dog के पास तो इतनी सारी चीजें हैं ना करने को, या खुजाएगा या भागेगा या काटेगा या भौंकेगा या खाएगा या सोएगा। इंसानों के पास तो हजारों चीजें हैं। इंसानों को तो ये भी नहीं है ना कि सिर्फ खाने को देख के लाह टपक रही है। मैंने किस चीज को किस चीज के साथ एसोसिएट कर दिया, तुम्हें एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं मैं इस चीज का। मेरा दोस्त कल रात को सेशन के बाद आई वाज हैंगिंग आउट विद माय फ्रेंड एंड माय फ्रेंड्स लाइक, मेरे को फोकस करने के लिए सिगरेट पीनी पड़ती है और सम शिट लाइक दैट। एंड इट्स लाइक ब्रो, देयर कैन नॉट बी अ वर्स एसोसिएशन इन योर हेड where you associated cigarettes with focus. What the hell? Nicotine rush. And this is from somebody who's tried all forms of nicotine, from gum to lozenges to patches to smoking to vaping, all of that. Nicotine will give you a 15-second high and then you'll crash. And when you crash, you feel like shit. You feel like more. So there's no focus there. You've told yourself that, you believed it, and that has become associated. So now what happens is you smoke a cigarette and your mind thinks it's gotten more focused. And so you go at work and you're probably more focused, but that has nothing to do with the cigarette. That's because your mind told you, well, you're more focused. That's placebo. But you will never be able to stop smoking cigarette until you have this story alive in your head. क्यों? क्योंकि तूने क्या बोल रखा है, सिगरेट मेरे फोकस का राज है, वो एसोसिएटेड है। कितने लोग होते हैं जब दिन बुरे जाते हैं, रात को बैठ के आइसक्रीम या केक खाते हैं, मीठा कुछ खाते हैं। जब दिन स्ट्रेसफुल है तो रात को दारू पीते हैं। क्या है वो? एसोसिएशंस, कंडीशनिंग जो हमने खुद पे कर दी है बिना रियलाइज करे। बट Pavlov sort of a secondary figure. The more interesting guy is Skinner. And Skinner is just batshit crazy. Skinner figured out something so unique. He figured out something so unique that in the 50s, we were almost close to solving all of psychology's problems ever. He figured out what then came to be known as the school of behaviorism, and he was the king of that throne. And Skinner came out with a concept called operant conditioning, which is similar to classical conditioning, but slightly different. Here is the idea. Skinner said, with rewards and punishments, you can either encourage a behavior or discourage a behavior. I think he ran that experiment on pigeons. And what he did was, to discourage pigeons from making a certain move, he gave them a tremor and an electric shock. And to encourage them, he gave them something to eat. And he saw that the pigeons repeated the behavior they were positively reinforced for and stopped doing the behavior they were negatively reinforced for. Positive reinforcement reward ho gaya, negative reinforcement punishment ho gaya. And if you look closely at it, what Skinner is pointing out is something parents have always understood and dog owners have always understood, and we understand about ourselves. If you want something repeated, reward it. If you don't want something repeated, punish it. And you'd think isme itna special kya, prakhar? He came out with something that is so instinctively understood anyway. But here is the idea. He started to show that almost all behavior is like that. He's like, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं वो, उनके अंदर वो कोड हो गया है रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू, बस खत्म। लोगों को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उनके अंदर बस ये कोड हो गया है एज अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, खत्म। एंड दिस स्लोली बिकेम द मोर डोमिनेंट व्यू कि एक्चुअली लोग काम क्यों करते हैं, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए। एवरीबडी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट, दे स्टार्टेड शोइंग दैट इन डिफरेंट एनिमल्स, इवन ह्यूमंस, कि होगा क्या, तुम कुछ काम कर लोगे, फिर तुमसे बोलेंगे भाई काम क्यों किया, तुम एक वजह बना दोगे मैंने ये इसलिए किया, बट एक्चुअली तुमने रिवॉर्ड के लिए किया। So Skinner was on a roll. Skinner moved from animal to animal, person to person, eventually wrote this book called Verbal Behavior.
And this is the peak moment for behaviorism, because this is the first time a psychologist took a proper punch at language and he tried to explain language with behaviorism. He said idea बड़ा simple है. बच्चा बोलता है मम्मी पानी, मम्मी उसको पानी दे देती है, बच्चा सीख जाता है पानी बोलने से पानी मिलेगा. मैं बोलूंगा मम्मी पानी तो मम्मी पानी दे देंगी. मैं बोलूंगा मम्मी खाना तो मम्मी खाना दे देंगी. अगर मैं बोलूंगा मम्मी लाना तो मम्मी खाना नहीं देंगी. तो बच्चा सीख गया, तो उसने बोला मम्मी खाना, जब मैं मम्मी खाना वाला परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज करूंगा वर्ड्स का तो खाना आ जाएगा. He says this is how humans learn. We put a series of actions together, and if it brings us the reward, we know we can do this again. If it does not, if it brings us punishment, we don't do this again. And he says all learning is essentially this: small rewards and punishments at the end of it. And then he moved on to language, and he said language is just like that too, bro. He's like, बच्चा बोलता है मम्मी बाथरूम जाना है, मम्मी बाथरूम ले जाती है. बच्चा बोलता है मम्मी बल्ले बल्ले, मम्मी बाथरूम नहीं ले जाती ना, खत्म. बच्चा लैंग्वेज ऐसे सीखता है. Because this is a fundamental question psychologists have to answer. You know, when we were studying Wallace's dilemma yesterday, we were asking what separates humans and animals so beautifully, and the answer is language. Language is at the bloody center of it. It's downright in the middle. One second. Right. Language is in the dead middle of it. You can't ignore it. And so psychologists had to tackle that. Nobody had dared. And this is when Skinner comes out with this book called Verbal Behavior. And Skinner, this granddaddy psychology figure, like nobody could disagree with him. Wherever he would walk, he'd get money thrown at him for research, this, that. And then there is a young guy, very, very young, 25, 26-year-old. He's a professor at MIT, Massachusetts Institute of Technology. He still is a professor at MIT. No, I think he retired, but he retired as a professor at MIT. Old fellow, still alive. And this is right dead in the middle of 1950s. His name's Noam Chomsky. And Noam Chomsky is famous, or was famous in the 20th century for being the smartest man ever. He's that smart. Because Chomsky was 25, just a very young professor, reads Skinner's Verbal Behavior, and then writes a critique, an essay, critically analyzing that book. And that essay destroyed Skinner and behaviorism forever. 25, 26-year-old guy, young as hell, walks in, reads the pinnacle of psychology research up until, and then walks on to forever demolish even the guy who wrote it. And he didn't do it where he attacked Skinner. He was just like, what the hell are you saying, Skinner? What the hell are you saying? Are you listening to yourself? He's like, what do you mean we learn verbal behavior through reward and punishment? He's like, if that was the case, then why do all kids say mummy pani do and not do pani mummy? Or some kids say mummy pani do and some say do pani mummy. Because mummy to samajh jayenge na pani dena hai. He's like, why is it such that bachcha 5-6 saal ka hota hai, he can use only so many words he's learned to make infinite number of sentences? Kahan sikha hai usne ye behavior? Where is this behavior he's saying? He's like, कैसे बच्चे को पता है ये सवाल पूछने जो उसको किसी ने इन्फॉर्म नहीं करे सवाल भी हैं? How is the child using language in a new and novel way? Well, you seem to say, Skinner, that everything is coded from learning and then किसी ने reward दिया या कहीं से reward मिला या काम completion हुई and we learnt it. How the hell are kids learning language? And this was the entry point into analyzing behaviorism properly. Suddenly everybody's like, yeah, bro, Skinner seems to be wrong, bro. Like, what the hell? Why were we believing what Skinner's saying? But the genius is that Skinner's not wrong. Well, you know, Chomsky's not wrong either. But how do I explain this? The scary part is, even after what Chomsky said, Skinner is still right. A lot of our behavior is just reward and punishment based. Even a lot of our self-talk is reward and punishment based. It's true. But what Chomsky pointed out is that भाई सब कुछ reward and punishment नहीं है, कुछ चीजें हैं meaning. बच्चे words के पीछे के meaning समझते हैं. That actions for humans have symbolic meaning. जब मैं पेड़ बोलता हूं, हम सबके दिमाग में एक इमेज आती है ना पेड़ की. बच्चे के लिए पेड़ सिर्फ एक आवाज नहीं है, कॉन्सेप्ट भी है. और उसको पता है उस कॉन्सेप्ट को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, कहां. एक मेंटल रियलिटी है वर्ड्स. ही सेड वर्ड्स, हां, कोई भी वर्ड कुछ भी बन सकता है. जैसे हिंदी में पेड़ बोलेंगे, इंग्लिश में ट्री बोलेंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इमेज सेम आई दिमाग में.
But he said एक image है. And then he went on further and he said, if you look closely, and this is Chomsky's work for the rest of his life, apart from his political commentary and whatnot. Chomsky is bloody genius. Chomsky's work was trying to figure out where does language come from. And he found not just that, well, language has meaning, but he also found that there is something called a universal basic grammar, a UBG. And he tried to figure out what that grammar is, because if you see across languages, there is a commonality in grammar ki adjectives will precede verbs and such is tarah karke. And he spent his lifetime coming up with new models to work that grammar out. But he said one more thing, and I think that is one of the most beautiful things I've ever read. He said, we actually have a certain technology for language. He called it the language acquisition device, which helps us learn language. And that is when Chomsky destroyed behaviorism as a whole. But behaviorism survived because, and that is the scary part, that a lot of our behavior has no meaning. It is just coded with reward and punishment, and we continue to do it regardless. And we'll see how, when we go further and we explore stuff, we realize how messed up our cognition really is, that it's not all meaning and whatnot. But the other interesting part that I need to bring forward is what Chomsky did in that moment was hit at psychology's obsession with behavior. क्योंकि साइकोलॉजी तुम एक्सपेरिमेंट कर ही बिहेवियर पे सकते हो ना, जो सेम चीज हम फ्रॉइड के केस में डिस्कस कर रहे थे कि दिमाग में अंदर क्या हो रहा है, क्या बात करोगे तुम. साइकोलॉजी तो बोलती है ये हुआ कि वो हुआ, ये हुआ कि वो हुआ. ही वाज लाइक, ब्रो, ये तुम्हारा बिहेवियर के साथ ऑब्सेशन है कि तुम सोचने लग गए हो कि ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी है ही बिहेवियर. तभी तो तुम खुद को बिहेवियरिस्ट बुला रहे हो. उसके पीछे का मीनिंग तुम भूल ही गए कुछ होता है. एंड इन दैट वे Chomsky comes into the scene sometime in the mid 1950s, and then he's known as the 400 IQ man for the next 50-60 years. Guy has literally said something about everything on this planet. He has a very famous debate with Michel Foucault on freedom and justice and whatnot, where Foucault is bloody speaking in French and this guy is speaking in English, and they're still talking to each other. And that is one of the most honest debates of all time, because if you see them talk, it's on TV, by the way, like it's a televised debate. Like they'll make an argument and then they'll sit and think for a while. And then they'll come up with a response instead of traditional debates. Oh, एक साथ तुम्हें response पता होना चाहिए because लोगों की appearance, लोगों को क्या लग रहा है, तुम्हें कितना पता है, तुम सोच रहे हो मतलब तुम्हें नहीं पता. So it's like a very beautiful debate, and it's done in 2 different languages. And Chomsky is just a bloody brilliant guy. And if you ever notice me do this, as I explained, this is a Chomskyan hand movement. I picked it up from watching too much Chomsky. So that is directly Chomsky. If you see him talk, like he's not a good talker, and he'll make this movement when he talks. This is Chomsky. Lovely guy, right? And this is where behaviorism comes to end, or at least the dominance of behaviorism comes to end. And iske baad we had a few more years before we came to the cognitive psychology revolution. But before we go there, I want to take you through a bunch of other psychology experiments, and social psychologists take you through like a little bit of a journey on experiments in psychology, and for that matter, theories in psychology. And the first person I want to hit at is this guy. His name's Fritz Heider, and I love Heider. And you'll say, Prakhar, aap to sabko, you love everybody, Prakhar. But no, you have to see how smart these guys are, right? Heider has this theory called lay scientific behavior theory, which talks about how you judge people straight up. And it talks about how you judge people in math. So he comes up with a formula. I'll show you that formula. Bloody brilliant. Like people who can put things in mathematics, I love them. Yep. Fritz Heider. हाँ ठीक है तो मैं दिखाता हूँ. And this is a study from my classroom. Chomsky should buy Art of Conversation. Oh, he's at University of Arizona right now. You are right. I think there is somebody here who is studying at University of Arizona. My friend Karan Patel, if you're here, say hi to Chomsky. Chomsky is so many thousand years old right now. He looks like death, bro. Oh wait, hold up. ऐसे नहीं दिखाऊंगा तुम्हें. Stop sharing. यार ये chat मेरी पूरी Zoom conversation ही वो कर देती है. Freeze. अबे भाई. अरे भाई ये तो गलत हो गया. एक मिनट रुको. I'm fixing stuff. Hold up. Okay, cool.
right. Okay, so this is an experiment from my student days. And when I was reading about Haider, our professor ran this experiment on us. Let me see if we put the formula out somewhere. वैभव, इसमें फॉर्मूला डाला था कहीं? नहीं डाला फॉर्मूला. वैभव, हाँ भैया, इसमें फॉर्मूला क्यों मिसिंग है? फॉर्मूला उठा के डालो इसमें, फॉर्मूला जो है वो वाला. हाँ. बट एनीवे, द फॉर्मूला इज दिस. तो मैं बाद में भी, you'll find it on the slides, but the formula is this. ठीक है? हाइडर्स लाइक, भाई, जब हम आदमी का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं, जब हम समझने की कोशिश करते हैं ये बिहेवियर कहां से आया, क्या हुआ, जब हम किसी को जज करने की कोशिश करते हैं, द वे वी जज देम इज वी फर्स्ट एस्टैब्लिश इसने किया क्या है, बिहेवियर क्या है. देन वी लुक एट सिचुएशन की डिमांड क्या है या आदमी की पर्सनैलिटी क्या है. So the formula Haider gave is very simple. The formula of how you judge other people. Very simple, Haider says. Very simple. He says, इंसान की औकात या इंसान की नीयत प्लस सिचुएशन की डिमांड इज इक्वल टू बिहेवियर. तुम जब भी किसी को जज कर रहे होगे, दिस इज द फॉर्मूला Haider says you will go through. और होगा क्या? अगर तो तुम्हें लगेगा सिचुएशन में कोई जरूरत नहीं थी, इस इंसान ने फिर भी ये कर दिया, बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है. अगर तुम्हें लगेगा सिचुएशन की जरूरत थी इसलिए उसने ये किया, तो इसने ये कर तो दिया महान काम, पर और क्या, और करता क्या, सिचुएशन की जरूरत थी. तुम किसी को भी देख लो, अगर तुम्हें सारी पॉलिटिकल डिस्कशन देखनी है ना, मोदी के अराउंड, गांधी के अराउंड, फलाना के अराउंड, फलाना के अराउंड, इनवेरिएबली अटैक और डिफेंस यही होगा. आदमी की गलती है, सिचुएशन की गलती है. आदमी की अच्छाई है, सिचुएशन की अच्छाई है. And Haider was so instinctive and so precise, उसने उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डाल दिया. He says a person's predisposition plus immediate situation is equal to behavior. And we tried to run this study in our classroom. Our professor ran this study in our classroom, and what he did for this study, which we won't be able to do here because we are at least 5-6 times the number of students here, and we were also in a physical space, is जब, और बहुत सारी studies थी इस पूरी क्लास में, we were constantly going through studies in the classroom itself, experiments he was doing in the classroom itself. और उसमें क्या करता था, he divided the class into two people whose last names were between A and K. जैसे मेरा गुप्ता है तो I was between A and K, and people whose last names were between L and Z, दूसरा group. And each of these people were, एक कंट्रोल हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल हो गया बेसिकली, है ना. एक कंडीशन ए हो गई, कंडीशन बी हो गई, बाद में कंपेयर कर लेंगे. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट. ही सेज, पहले तो जो एल से जेड वाले अपनी आंखें बंद कर लो, और ए से के वाले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ये डेटा पढ़ो. डेटा ये है, I don't think, anyway, forget it. The experiment is simple. The experiment is something like, तुम्हें एक स्पीच पढ़ाई जाएगी सबको, पर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट जो है उस स्पीच का अलग अलग दिया जाएगा. ये बताता नहीं है हमें बताता नहीं है कॉन्टेक्स्ट अलग अलग दिया जाएगा. ही जस्ट सेज A to K वाले अपनी आंखें खोल के रखो, L to Z वाले बंद रखो, और कॉन्टेक्स्ट ये मिलता है कि एक बच्चा है जिसको कोई स्पीच देनी है, उस स्पीच का टॉपिक और उस स्पीच में, उस डिबेट में वो क्या पोजीशन लेता है उस टॉपिक पे, वो बच्चे की मर्जी है, वो पिक कर सकता है. कि इंस्ट्रक्टर ने कोई पोजीशन टॉपिक नहीं दिया. A to K वालों को, I think ये स्लाइड्स बनाने में काफी गड़बड़ हुई है टीम. But anyway, A to K वालों को, as far as, yeah bro, I think you guys, this got sincerely messed up on your end. Yeah, you messed up A to K, L to Z wali allocations also while you're trying to make this slide. Anyway, forget this slide now. We'll have to do it some other way because this is not going to help us. This is only going to confuse us. So anyway, he divides the class in two people. He says, listen, मैं तुम्हें एक speech पढ़ाने वाला हूँ. उससे पहले L to Z वाले अपनी आंखें बंद करो, A to K वाले अपनी आंखें खोल के रखो. A to K वालों को देख, पढ़ने में आता है कि जो ये स्पीच है, एक बच्चे ने अपनी मर्जी से लिखी है, अपनी पोजीशन लेके लिखी है. इंस्ट्रक्टर ने उसे कुछ नहीं बोला, तुम्हें क्या डिबेट लिखनी है, क्या पोजीशन लेनी है, कुछ नहीं लिखा. फिर L to Z वाले आंख खोलते हैं, A to K वाले अपनी आंख बंद करते हैं, और L to Z वालों के लिए लिखा होता है स्क्रीन पे कि एक बच्चे को एक स्पीच देनी है, और वो पोजीशन और टॉपिक दोनों इंस्ट्रक्टर ने दिए हैं बच्चे को. And then you are all asked to read this slide here. Actually, this is 2 slides. Also a bad decision. It's like, what are you guys doing?
Anyway, we'll take you through these slides. I'll read them out loud. Let me read these out loud. The United States, तो ये the experimental speech ये है. दोनों ग्रुप्स को सेम स्पीच पढ़ाई है. दोनों ग्रुप्स को सेम स्पीच पढ़ाई है. The United States of America was formed out of the ashes of a civil war, a violent and spirited revolution of those who wanted the freedom to choose their destiny against an oppressive government that refused to listen. Right? ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है तो समझना, वो अमेरिका की हिस्ट्री से बोरो कर रहे हैं स्पीच में. The struggle of the unrepresented and repressed goes on today in Palestine. The Palestinian people fight a revolutionary war against an oppressive Israeli government in which they have no voice. They, much like the patriots in the American Revolution, have no political recourse, no means to negotiate with the powerful. The Palestinian people face the same overwhelming odds our forefathers did. A large professional military force and unsympathetic Israeli government. They struggle for a homeland they were forced out of, a homeland they inhabited for thousands of years. In this America, born from the ashes of a revolutionary war, born of hope in the face of superior military might, we should embrace the Palestinian people as they struggle for the same freedoms our forefather won us 2 centuries ago. This is the speech that every kid reads. This is the speech that every kid reads, right? But हमारे पास कॉन्टेक्स्ट अलग है. मेरे ग्रुप वालों के पास कॉन्टेक्स्ट क्या है कि बंदे ने फ्री चॉइस, अपनी मर्जी से एक टॉपिक चूज करा, इजराइल पैलेस्टीन, अपनी मर्जी से उसमें पोजीशन चूज करी, प्रो पैलेस्टीन. इंस्ट्रक्टर ने कुछ नहीं बोला, हमें यह बताया गया इंस्ट्रक्टर ने कुछ नहीं बोला क्या टॉपिक क्या है. L2Z वाला ग्रुप जो है जिसमें वैभव बैठा होता, क्योंकि वैभव का लास्ट नेम रंगलानी है, उसको क्या बोला गया कि इंस्ट्रक्टर ने दी है चॉइस कौन सा टॉपिक होगा और उसमें क्या पोजीशन ली जाएगी. अब मैं और वैभव से इवेंचुअली एंड में पूछते हैं हमारे ग्रुप से, तुम्हें क्या लगता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये जो स्टूडेंट जिसने स्पीच दी है ये कितना प्रो पैलेस्टीनियन है? राइट? दे आस्क अस, A to K वाले, तुम्हें क्या लगता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग वेरी प्रो पैलेस्टीनियन, कितना प्रो पैलेस्टीनियन है ये बच्चा? A to K वाले. हमें क्या पता है? हमें क्या पता है? इसने अपनी मर्जी से टॉपिक चूज किया. इफ यू सी, मेरे ग्रुप ने क्या जवाब दिया? मैक्सिमम लोगों ने 7 to 10 के बीच में जवाब दिया. 8 लोग अलग थे, बाकी मैक्सिमम लोगों ने 7 to 10 के बीच में जवाब दिया. ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट L2Z, जहां पे क्या बोला? सिचुएशन की डिमांड थी प्रो पैलेस्टीनियन स्पीच मेक करने की, इंस्ट्रक्टर ने पोजीशन दी हुई थी. तो L2Z वालों ने क्या बोला? भाई ऐसा लगता है ये या तो माइल्डली है या शायद नहीं भी है प्रो पैलेस्टीनियन. लोगों ने फिर भी बोला प्रो पैलेस्टीनियन है कुछ लोगों ने. बट कितना वेट शिफ्ट हो गया बिटवीन 5 and 6? फ्रॉम 7 to 10, हाउ मच ऑफ इट हैज मूव टू 5 to 7? दिस इज द ब्लडी मैजिक दैट हाइडर केम टू. हाइडर्स लाइक, देखा, तुम सोचते भी नहीं इंसान एक्चुअली क्या है, तुम सिर्फ एक बेसिक मैथमेटिक्स करते हो. बिहेवियर क्या है, सिचुएशन की डिमांड क्या है, और आदमी की औकात क्या है, उसकी नीयत क्या है. फ्रिट्ज हाइडर एसेंशियली कह रहा है, भाई जब भी तुम्हें बिहेवियर जज करना हो, तुम कोई बिहेवियर ले लो. मैं सपोज यहां खड़ा होता हूं और मैं एक बंदे पे गुस्सा करना शुरू कर देता हूं. सपोज मैं अनिल भाटी को सुनाना शुरू करता हूं, अनिल तू क्या बोल रहा है, तू चुप रहा है, ये वो. सब लोग क्या देखते हैं? प्रखर भाई गुस्सा हुए. अब पूछते हैं क्यों हुए प्रखर भाई गुस्सा? एक रीजन तो यह है कि अनिल भाटी ने उसको परेशान कर दिया होगा. फिर तो भैया का गुस्सा होना जायज है. फिर भैया गुस्से वाले आदमी थोड़ी है, प्रखर कोई गुस्से वाला आदमी थोड़ी है. फिर वो तो अनिल भाटी ने उसको परेशान कर दिया था. दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है? अनिल भाटी ने कुछ नहीं किया था, प्रखर बहुत गुस्से वाला आदमी है. तो या तो तुम वेट बिहेवियर का डालोगे सिचुएशन पे, या डालोगे तुम इंसान पे. यह है हाइडर जो कह रहा है. कुल हाइडर जो कह रहा है वो ये है, अगर तुम्हारे पास डेटा है कि सिचुएशन ने ये करने को बोला, तो तुम बोलोगे इंसान, उसकी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन की बात थी भाई, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे. गांधी ने क्या किया? गांधी ने तो वो किया जो सिचुएशन उससे डिमांड करती थी, कि जरूरत थी किसी को, और गांधी वहां पे थे तो गांधी ने वो कर दिया. एक एग्जांपल है भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह को गुस्सा आया, भगत सिंह ने उसे मार दिया.
कोई बोलेगा अरे कैसे, क्या क्या बात कर रहे हो, सिचुएशन की डिमांड थी भगत सिंह का उसे मारना, डायर को। ये दो कंपोनेंट हैं जो हम जज करने में यूज करते हैं, सिचुएशन क्या मांगती है और उस सामने वाले की औकात क्या है, सामने वाले की नीयत क्या है। That is the bloody brilliance of what Haider came out with mathematically. Udham Singh, my bad. Here is another one. Here is another one of Haider's brilliant theories, and this is called balance theory in relationships. And this one's so beautiful. You know how, like, probably you don't know, but I know as a content creator, you'll often get, Bhaiya, what do you think about Sandeep Maheshwari? Bhaiya, what do you think about Sadhguru? Right? Like, you'll get messages like this. And you always wonder, how does it matter what I think about these guys? Tumhe kya hai? But hai kuch, and Haider's on to that. And Haider's on to that in so many ways. You know, have you ever heard dost ka dost dost, dushman ka dushman dost, dost ka dushman dushman, dushman ka dost dushman? This is what Haider's doing here, okay? Haider comes up with this idea of balance theory. Haider says, हमें अपने relationships में balance पसंद है. अब मेरे को प्रखर पसंद है, मेरे को संदीप महेश्वरी पसंद है, तो मेरे अंदर एक अनकॉन्शियस नीड है कि प्रखर को भी संदीप महेश्वरी पसंद हो. मेरे को प्रखर नहीं पसंद, पर प्रखर को संदीप महेश्वरी पसंद है, तो मेरे को भी संदीप महेश्वरी पसंद नहीं आएगा क्योंकि मेरे को प्रखर नहीं पसंद. There is this constant need for a balance, a mathematical balance, where if you notice Joe to Tina plus, Tina to Tom plus, so Joe to Tom has to be plus, तभी balanced है. राइट? जो टू टीना नेगेटिव, बनती नहीं जो और टीना की, टीना और टॉम की नहीं बनती, तो जो और टॉम की बनती है. ये वो वाली बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त. ये वो वाली बात है, ठीक है, ये वो वाली बात है. और तुम देखो, जो और टीना की बनती है, टीना और टॉम की बनती है, फिर जो और टॉम की बननी पड़ेगी, वरना अनबैलेंस्ड. This is why we ask our friends for approval for a partner. Yes, you are spot on. That is why you want your mother to like your girlfriend or your father to like your boyfriend or whatever. This is it. This is why you like some of your friends to like your other friends to like your friends. And Fritz Heider, this bloody genius, figured it out mathematically. And I say, oh my God, what a genius. Right? Smart guy, no? Then there is this other guy. And in fact, these are two people. And inka naam hai, bro, ye study, this is going to make you shit your pants, okay? Okay. There were two guys and their name was Shakhter and Singer. Right? I'm forgetting their first names. But Shakhter and Singer are of the same tradition in trying to understand emotion. Like if you remember, I mentioned the name William James. So William James and उसका एक दोस्त होता था Lange करके, Lange करके, they had come up with a theory of emotion back in the late 1900s, or so late 1800s, early 1900s, and then people kept building on it until Shakhter and Singer came up with this idea of a two-factor theory. Two-factor theory of emotion. How do we get emotional states in our mind? How do we experience emotion? That is what they're trying to answer. Okay, and listen to this. Shakhter and Singer like emotions inherently are nothing. Okay, they're like कोई भी चीज ऐसा नहीं होता emotion मैं sad हूं, कोई अंदर से कोई एक अलग चीज चल रही है sad, या मैं happy हूं या मैं angry हूं. He's like ऐसा नहीं होता. He's like there is two factors in emotions. Again mathematics. Two factors. One is physiological arousal, bodily sensation. तुम्हें बॉडी में कुछ कुछ महसूस होता है, बॉडी में कुछ कुछ महसूस होता है. उसके बाद तुम आसपास देखते हो, either consciously or unconsciously, and you find a reason for that, and you add those two and you call it an emotion. And you'd be like, how dare you say emotions are not real? I'm not saying emotions are not real. I'm just telling you how emotions are made. Because if any of you has ever drank too much coffee, unknowingly बैठे बैठे कॉफी पी के काम करते करते, and then suddenly यार मेरे को काम का बड़ा स्ट्रेस है, मेरे को काम का बड़ा स्ट्रेस है, only to later realize वो actually मैंने बहुत कॉफी पी ली थी. This is exactly what's happening. This is exactly what is happening. Or, you know, what happens is, say there is something that happens between boyfriend and girlfriend, husband and wife, friend and friend, and you go to your other friend and you try and talk to them, and they say something that suddenly puts you at rest. यार actually ना वो ही बेवकूफ है यार. And then they give you an answer as to how they're बेवकूफ.
You have found a label for this arousal that you were feeling. अभी तक यार पता नहीं उसने ये क्यों किया, उसने पता नहीं ये क्यों किया, फिर तुम्हें किसी ने वो वजह दे दी, तुमने उन दोनों को जोड़ के बोला हाँ अब मैं संतुष्ट हूं, ये बेवकूफ है, या ओहो ये मेरी गलती थी, मैं कितना तड़प रहा हूं. And this is how they tested this out. Okay, this is a brilliant study. In fact, this was tested out by Arthur Aaron and Donald Dutton. ये दो और साइंटिस्ट थे. And they tried to test it because Schachter and Singer की भी अपनी स्टडी है जिसके थ्रू उन्होंने वो फिगर आउट किया. बट वो समझने के लिए there is about 4 into 8 different conditions I will have to explain, and that just would have taken forever. So I was like, Schachter Singer वाली नहीं, हम लोग Dutton and Aaron वाली स्टडी के बारे में बात करेंगे. एंड इन लोगों ने टेस्ट करने की कोशिश करी क्या फर्जी इमोशन इंसान के दिमाग में डाले जा सकते हैं. The answer is yes. And this is how they did it, okay? They took an experimental group, they took a control group. They put both the experimental and control group through a task, and that task was walking across a bridge. ठीक है. बट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो ब्रिज है ना वो बड़ा पतला है, बड़ा शेकी है और नीचे बहुत गहरी खाई है. एंड जो कंट्रोल ग्रुप है ना उनका ब्रिज बड़ा स्टेबल है, ब्रॉड है और नीचे कुछ नहीं है. यू कैन इवन इफ यू फॉल यू वोंट डाई, यू नो. एंड दे मेड देम वॉक थ्रू इट. एंड द एक्सपेरिमेंट वाज, जब वो वॉक कर रहे होंगे ना ब्रिज के एंड में इनको एक औरत मिलेगी. औरत इनको बोलेगी अब तुम्हारा जो सेकंड टास्क है यहां से वो है एक अपनी मन घड़त कोई भी कहानी लिखना. और अगर आपको कोई सवाल हो, ये सारे लड़के हैं बाय द वे, दे आर ऑल मेन इन दीज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, दे आर ऑल मेन. सो दे मीट एन अट्रैक्टिव फीमेल एट द एंड ऑफ द ब्रिज वंस दे आर डन वॉकिंग, एंड देन दे आर टोल्ड लिसन यू हैव टू राइट अ स्टोरी व्हाटएवर यू वांट टू राइट, एंड दे आर गिवन अ कार्ड. वो औरत उनको कार्ड देगी, एंड शी इज एन अट्रैक्टिव वुमन, कार्ड देगी और बोलेगी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कॉल मी. ठीक है. एंड दे ट्राई टू सी कि क्या कहानी लिखते हैं ये लोग, एक्सपेरिमेंटल वाले और कंट्रोल वाले, और कितने एक्सपेरिमेंटल वाले लोग उसको कॉल करते हैं उस औरत को बाद में, और कितने कंट्रोल वाले कॉल करते हैं. द रिजल्ट्स वर वेरी ऑब्वियस. द गाइज हु एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले लोग जो पतले ब्रिज पे, शेकी ब्रिज पे, जो बहुत ही डेंजरस नीचे खाई है उसके ऊपर वॉक करके गए, एंड दे मीट द वुमन, दे कॉल हर मोर ऑफ्टन. In fact, their stories, the मनगढ़ंत story लिखनी थी, their stories have more sexual content. They write more about sex for some reason. And the hypothesis is this is what they were testing out. They're like, because experimental group wale log were walking over that bridge and there was all this concentrated fear ki main gir na jaun, there was physical arousal, adrenaline was pumping through them. They were walking over that bridge, adrenaline is pumping through them, their heart rate is fast, they're feeling something in their body. But as soon as they're at the end of it, they see an attractive female. They take all that physical arousal, all that emotion, which was actually maybe fear or anxiety or nervousness or just not wanting to die or whatever, and they transfer it to the nearest cognitive label, which is sexual attraction. They find out, surprisingly, that those guys were just way more likely to be sexually aroused afterwards in a way where their stories were more sexual and they called up that female more often. That उन्होंने अपनी physiological arousal को बिल्कुल mislabel कर दिया बाद में. And that is true for most of your emotions as well. You feel something on the body, it's a physiological arousal. कई बार ये होता है ना, this is one of the brilliant advices I got about like mental health and such is always check your stomach. क्योंकि हो क्या रहा है, पेट में जलन हो रही है एसिडिटी से, गैस से, ना खाने से, बहुत ज्यादा खाने से, ओवर ईटिंग से, अंडर ईटिंग से, ये वो कॉन्स्टिपेशन से, जो भी. और आदमी अपने काम में बिजी है, आदमी रियलाइज करता है मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं. क्यों? क्योंकि उसको फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा है, रीजन ढूंढता है काम. ओ मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं, या मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं आज अपनी, दिस इज अ बैड डे. बट एक्चुअली व्हाट इट इज दैट योर स्टमक्स नॉट हेल्दी. You've not shat yourself in the morning. You've not, your stool is not being, whatever. You're not healthy. It's not that you're stressed. This is the misattribution theory of emotion that Dutton and Aaron came out with, working on top of Schachter and Singer. Schachter and Singer said what? There is 2 factors to an emotion. एक, तुम्हारी बॉडी में कुछ हुआ. दूसरा, तुमने आसपास देखा क्या हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है, तुमने उनको जोड़ा, एक इमोशनल स्टेट बना दिया अपने लिए. Aaron and Dutton were like, अगर ये बात ठीक है, अगर genuinely इसमें 2 steps involved हैं, तो हम इन steps को तोड़ के
उल्लू भी बना सकते हैं लोगों को. And they tried that with that experiment and it worked. And here is where the bloody kicker is. Here, I think I came across this study 2019, maybe something like that. Yeah, I think 2019. And then I was in Vipassana months later. And all Vipassana, which is supposedly Buddha's own technique of meditation, is about observing your body, feeling the sensations on your body, just feeling the sensations on your body, and keep moving forward. Keep moving forward. Don't get hung up on a sensation. And I think what they're trying to do is exactly counteract what Schechter and Singer discovered. कि तुम एक इमोशनल स्टेट से दूसरे इमोशनल स्टेट खिंचे जा रहे हो. अभी आज हैप्पी डे है तो कल सैड डे है. अब मैं एंग्शियस हूं, अब मैं एंग्री हूं, अब मैं ये हूं, अब मैं वो हूं. लिटरली व्हाट इज हैपनिंग इज यू डोंट नो योर बॉडी एंड यू डोंट नो हाउ इट फील्स. सो सिट डाउन एंड नोटिस ऑल द अराउजल यू हैव ऑन योर बॉडी एवरीवेयर. कहीं पे हार्ट बीट महसूस होगी, कहीं पे जलन महसूस होगी, कहीं पे दर्द महसूस होगा. एंड बिफोर यू लेबल इट अनकॉन्शियसली विद स्टफ दैट इज अराउंड यू, रिलैक्स. एंड आई वाज लाइक, huh, is that why this works? Because all emotions necessarily need to go through a physiological route. Huh. If you want to notice it ever, when you're very happy, if you're ever very happy, just sit down calmly and notice what is happening in your stomach. If you're about to walk on a stage, and this is, okay, here is another brilliant example. When you're about to walk on a stage to give a speech, and when you're about to sit on a roller coaster, it's the same feeling. Physiological arousal, which is lose yourself. Arms are heavy, knees weak. Oh, arms are sweaty, knees weak, arms are heavy, whatever. Same emotion. Heartbeat तेज, palms sweaty, knees are weak. सबके साथ तुम एक अच्छी क्यूट लड़के या लड़की से बात कर रहे होगे, सेम इमोशन. तुम कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का जवाब देके बैठे होगे, सेम फिजिकल मैनिफेस्टेशन, बट उसके ऊपर के लेबल अलग अलग है. There is this very interesting story from my childhood. I used to be very nervous around my first girlfriend, जो मेरी स्कूल में गर्लफ्रेंड थी. मतलब मैं इतना नर्वस होता ना, मेरी जबान नहीं निकलती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाता था. And then she became my girlfriend. You know, things worked out. Before that, ये था कि I like her, and then she liked me back or whatever. And I went from being absolutely nervous to slightly excited about seeing her the next day. Nothing changed as far as my body was concerned. My interpretation changed. Pehle, I was afraid of not getting her. Then I had her. Now I was excited about exploring her. Same stuff happens to you all the time. When you're about to go on a stage, you feel that. You were like, oh, koi mere pe hasega. Oh my God, gadbad ho sakti hai. Dar, anxiety, nervousness. On the other hand, मैं एक रोलर कोस्टर पे बैठने वाला हूँ, बहुत मजे आएंगे, 5-7 सेकंड, लाइक मैं स्काई डाइव करने, एंड दैट इंटरप्रिटेशंस. इनफैक्ट एक स्काई डाइविंग के प्रोसेस में, इफ यू आस्क समबडी हु स्काई डाइव, इनिशियली दे आर सुपर नर्वस, देन दे fall, they jump, and then they're falling. Eventually their mind gets used to the fact that they'll survive, that it's okay, थोड़ा बहुत, and it becomes excitement. They start screaming, yeah, आजादी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, blah 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 bullshit. It's the same thing. This is literally the groundwork for emotion. And Schechter and Singer were smart enough to just come up with it mathematically. But okay, we are not done. Of all the people in the world, of all the psychologists in modern time in the world, this guy, his name is Bem. And when I read Bem, it blew me away. Bem is right up there for me. That is why I only included my favorites. I did not go to attitudes and persuasion wale usme nahi. I was just like, no, I'll just take my favorite guys from social psychology, okay? And Bem has a theory of self-perception. Bem is basically asking, how do we understand our own selves? And this is what Bem comes up with. Bem looks at himself, looks at his surroundings, tries to understand. He's like, you know what? You may think you know yourself. You may think you have some private access to who you are. No. You judge yourself just like you judge everybody else from the outside. Bem he's harsh, bro. He has no shit to give. He's like, तुम्हें लग रहा है तुम्हें पता है तुम कौन हो,
तुम अपने आप को भी वैसे ही जानते हो जैसे किसी और को जानते हो, बस तुम्हारे पास तुम्हारे लिए एविडेंस ज्यादा है। तुम अपने आप को भी वैसे ही जज करते हो, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं तुम्हें पता नहीं। तुम अपने दिमाग में बिहेवियर रन करोगे, फिर देखोगे सिचुएशन की क्या डिमांड थी, और उसके बाद आओगे अरे हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन की डिमांड थी इसलिए मैंने इसको चांटा मारा, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूं। उसने बोला तुम्हें नहीं पता तुम कितने अच्छे हो बुरे हो। And we'll talk about this with, like, one of the best, interestingly, one of the best places to teach you psychology is breakups. And it's the same way. Sometimes people hate themselves after a breakup. Sometimes people hate others after a breakup. It's the same thing. You know, you are looking at them and yourself from the outside. And you're trying to be like, kiska behavior better hai. It is just that you have more evidence for yourself. तुम्हें अपने बारे में इंफॉर्मेशन, तुमने क्या क्या बिहेवियर किया ज्यादा पता है सामने वाले से. But I'll show you the study that BEM did, and it blew my mind. But what BEM is saying is, हाइडर जो तू कह रहा है ना, हम बाकी लोगों को कैसे जज करते हैं, हम खुद को भी वैसे ही जज करते हैं. हम सारा टाइम खुद को जज करते हैं और उसी मैथमेटिक्स के थ्रू जज करते हैं. We know about ourselves, we learn about ourselves by judging ourselves in the same way as we know and learn about everybody else. That is the brilliance of BEM, and this is how they found out. And this study was not done by BEM. The study was done by Nispet, Richard Nispet, Green, एक GREENE करके बंदा है. These are all mentioned. Lepper, Green, and Nispet की एक study है 1979 से. And the study is this, okay? Brilliant study. They invited a bunch of kids. और उन kids को बोला coloring करो. कलर्स दे दिए, क्रेयॉन्स दे दिए, वो दे दिया, कलरिंग करो. और इन बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया. एक ग्रुप को बोला कलरिंग करो, रिवॉर्ड मिलेगा, सीधा रिवॉर्ड मिलेगा, विच इज वेरी मच लाइक व्हाट स्किनर वुड हैव डन. दूसरे ग्रुप को बोला तुम कलरिंग करो बस, और कुछ नहीं बोला, और एंड में रिवॉर्ड पकड़ा दिया. तीसरे ग्रुप को ना कुछ बोला ना रिवॉर्ड पकड़ाया. सिंपल, बेसिक. ठीक है. 2 हफ्ते बाद उन बच्चों को दोबारा बुला लिया, आ जाओ भाई एवरीबडी कम इन. एंड दिस टाइम दे वर लाइक तुम्हें क्या करना है, खिलौनों से खेलना है, खिलौने खेलो, तुम्हें कलरिंग करनी है, कलरिंग करो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो करना है करो, जो भी मर्जी आ रही है एक जगह पे छोड़ दिया. एंड दे ट्राई टू सी कौन से बच्चे कलरिंग करते हैं और कौन से बच्चे कुछ और करते हैं. एंड इफ यू लुक एट व्हाट स्किनर वाज सेइंग, स्किनर वुड हैव बीन लाइक, क्या भाई उनको तुमने रिवॉर्ड दिया है, वो रिवॉर्ड वाले बच्चे रिवॉर्ड वाला काम करेंगे, दोबारा कलर करेंगे. That is what dopamine would dictate as well, in a traditional understanding of dopamine from yesterday. If you get a reward, dopamine gets coded. But here is what they found. The kids who were given no reward were coloring a lot more than the others. And this is where BEM's theory of self-perception applies. Because the kids went in their head, they were like, हमने last time coloring क्यों करी थी? कोई रीजन तो है नहीं. जिसको अवार्ड मिला है वो तो कह रहा है अवार्ड मिली थी इसलिए कलरिंग करी थी, वैसे थोड़ी कलरिंग पसंद है मेरे को, सिचुएशन की डिमांड थी कलर करना, रिवॉर्ड चाहिए था. तो जिसको बाद में भी रिवॉर्ड मिला उसने क्या बोला, अरे वो तो मैं यार एक्चुअली रिवॉर्ड के लिए कलरिंग कर रहा था, पता नहीं था, बट एक्चुअली वो तो. बट वो बच्चे जिन्होंने खाली पीली कलरिंग करी थी, उनके दिमाग में क्या गया, मेरे को कलरिंग पसंद होगी तभी कलरिंग कर रहा था मैं. And so they found that those kids who were not given a reward were just way more likely to color than the kids who were given the reward. And this inverted B.F. Skinner on his head. BEM's like, you think you know yourself? No. You are judging yourself from the outside nonstop. That is how smart BEM was. And like it just makes me laugh because हम लोग इतना सोचते हैं हमें पता है हम कौन है, हमें पता है हम कौन है, ठीक है, और तुम्हें इंटरनेट पे एडवाइस बन जाएगी, अपने बनो, ठीक है, बिकम एन इंडिविजुअल या बिकम दिस दैट, जो भी बन जाएगी. कहां से पता करें? Where do you find that out? How do you know who you are or who you want to become? Because you don't seem to have even access to your own self, scientifically speaking. Pragmatically is a different question. But that is the bloody genius of BEM. And with that, I mean, I think we've concluded all of social psychology. Now, I don't think we should get a break. I want to continue and go on to cognitive and finish cognitive as well. क्या opinion है आप लोगों का? If you just definitely want a break, I will give you a 3-4 minute break. Otherwise, we'll just go on.
Okay, we'll take a 2-minute break. We'll take a 3-minute break. We'll meet at 9:25 and we'll start with. इसके बाद हम लोग cognitive psychology और cognitive psychology के बाद group psychology, ये दो elements और discuss करेंगे. हाँ, फिर उसके बाद तुम पीपीटी घर पे देखते रहना. पीपीटी में सब covered है, सब mentioned है. ठीक है? 3 minutes. You've got 2 minutes now. 9:25 and we start again. 2 minutes. ले लो ले लो ले लो. सोच लो अभी तक तुमने क्या सुना है, क्योंकि अभी और दिमाग फ्लिप होना है थोड़ा बहुत. Okay, welcome back. I will get the PPTs. वैभव PPT अपलोड हुई है कल की टैग मैंगो पे? वैभव, आदर्श, असीम, हेलो, अपलोड हुई है कल वाली? हाँ, कल वाली हुई है. आज वाली भी कर देना. वैभव, इस पीपीटी में जो वो वाला एक्सपेरिमेंट था, शैक्टर सिंगर नहीं, हाइडर का पहले वाला एक्सपेरिमेंट, ले साइंटिफिक थ्योरी वाला, उसमें L2Z और A2K की कंडीशंस रिवर्स करो. स्लाइड्स पे गलत लिखी हुई हैं. वैभव, हो तुम यहाँ पे? He's here. He'll just come in a second. He's just taking a break. He just texted me. अच्छा. तो रोहन, इन्फॉर्म वैभव कि जो हमारा जो हाइडर का ले साइंटिफिक थ्योरी बिहेवियर वाला था ना, जो मेरी क्लास की असाइनमेंट है A2K L2Z वाला, उसमें A2K में कंडीशन ये रखी है, इंस्ट्रक्टर ने बताया क्या पोजीशन लेनी है, और L2Z में स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि बच्चे की फ्री चॉइस थी, बट एक्चुअली वो उल्टा है. A2K में फ्री चॉइस थी और L2Z में बताया हुआ था. ठीक है. So that has to be reversed, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. रिकॉर्डिंग्स में दोस्त, जितने लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा टाइम लगता है यार. कल तुम सोचो हमने 12:30 पौने 1 खत्म किया है, उसके बाद हम भी 4-5 घंटे से लगे हुए थे. आज होपफुली हम लोग बिफोर वी स्लीप विल बी एबल टू अपलोड इट. वीडियोस विल बी अवेलेबल. आई थिंक विल मेक अ डिसीजन, बट probably for a week. Q&As we cannot put for privacy reasons, bro. I don't want, there is just, we don't like थोड़े प्राइवेसी, क्योंकि लोग कुछ ना पर्सनल सवाल भी पूछ लेते हैं, तो हम Q&As नहीं डाल सकते. मे बी आफ्टरवर्ड्स वी माइट एडिट देम एंड अपलोड देम इन यूट्यूब इन अ वे कि बंदे की आइडेंटिटी रिवील ना हो. कोई कह रहा है, कैन यू स्टॉप रेफरिंग टू अस एज बच्चे, एंड आई एम हैविंग द मोस्ट टीचर इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ माय लाइफ. स्कूल में टीचर बोलते हैं ना बच्चे ऐसा करके. अच्छा, मैं अगेन समझाऊं. ओके, सो
बैम इज सेइंग, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम खुश हो, उदास हो, तुम कैसे हो, तुम क्या, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, जब तुमसे कोई पूछता है हाउ आर यू डूइंग, बैम इज सेइंग तुम्हें ऑटोमेटिक नहीं पता तुम क्या कैसे हो, तुम क्या हो, तुम देखते हो तुमने आज क्या किया, तुम्हें वो करने की क्या वजह थी, ओ मैं एक्चुअली बहुत खुश हूं क्योंकि आज दिन जबकि बहुत खराब था तो भी मैं खुश हूं. एंड द स्टडी इज दिस हाइडर स्टडी और बैम स्टडी? No, this is Hyder study. But the idea is you yourself don't know shit about yourself. You analyze your own behavior to say, oh, this is me and this is me. You don't know shit about yourself. That is what BEM is saying. You don't have private access to who you are. जैसे हमें क्या लगता है, तू अलग है, मेरे को तेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैं हूं, मेरे को मेरे बारे में पता है. नहीं, he says तुम्हें अपने बारे में भी साले कुछ नहीं पता, तुम्हें अपने लिए भी एनालिसिस करना पड़ता है वो सेम जो हाइडर कह रहा है. सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन की डिमांड क्या थी, बिहेवियर क्या था, आदमी की औकात क्या है, आदमी की वो क्या है. Daryl Bem. Bem's full name is Daryl Bem. Thanks. समझ रहे हो? अच्छा, there's somebody else asking another question. यार मेरी चैट इस लेवल पे हैंग मार जाती है ना, क्या करूं मैं? रोहन, तेरे को चैट एक्सेस है? हाँ जी, I can see. So if Bem inverted Skinner's theory on its head, then why do we still do things for reward? And why did the kids color without a reward? Great question. Because none of these theories are the all truth. Like they're not like ultimate truths in any way. That is what human behavior is so complex. You can have models, like Skinner had a model, and that model is bloody accurate. You know, you upload pictures on Instagram because you like the likes that come from there. That is the reward, and that is why you upload pictures. And when somebody asks, why do you upload pictures on Instagram? You're like, bro, social presence bhi to banani hai na, bro. Build in public, bro. You know, you put out tweets on Twitter as if you understand the world in some way. And when somebody asks you, तेरे को पता भी है ये सब, ये नहीं bro, मेरे को तो I have to build in public, bro. You know, Twitter ka algorithm, bro. You give all these like fancy explanations for behavior that's absolutely just for the reward of validation. Right? You do that all the time. So Skinner's not wrong, and Bem is not wrong either. What happens in these theories or what happens in these experiments is, suppose Bem ke hum or rather the way this was taught to us, and this is the bloody genius, okay? The way this was taught to us in class, and this was a graduate level class. So 12-13 बच्चे थे, सारे लोग MSc कर रहे थे अपनी साइकोलॉजी में. मैं अकेला BSc वाला स्टूडेंट था, प्रोफेसर से लड़के बैठ गया था उस क्लास में कि मेरे को पढ़नी है ये. एंड उस क्लास में हमारा एक होमवर्क ये था, एक असाइनमेंट होमवर्क ये था, एक एक्सपेरिमेंट दिया हमें ऐसा ही कुछ, और उसे बोला अब जितनी थ्योरी है उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस करो, फाइनली बताओ तुम्हें क्या लगता है कौन सी थ्योरी काम करेगी, और उसके बाद बताओ वो थ्योरी बाकी थ्योरी से सुपीरियर क्यों है. सो इट इज नॉट लाइक हर सिचुएशन में कोई ना कोई एक थ्योरी लगती है, कई बार एक सिचुएशन में 50 थ्योरी लगती है. तुम अगर देखोगे एंड यूल सी where is Bem meets Hyder. अच्छा नहीं, Bem meets Festinger. We'll show you how cognitive dissonance and Bem meet in a way. How like Festinger की theory and Bem की self-perception theory sort of come together. I cannot share that exercise. I don't think that'd be fair to my professor, and I'll have to look. Nisbet experiment का outcome दोबारा बताऊं. BS, I think मेरी BSc economics है, BA psychology है, 2 डिग्री है मेरी. I have 2 degrees. Anyway, so निस्बेट वाली स्टडी का, निस्बेट और ग्रीन और लेपर क्या करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, क्विक, बच्चों को बोलते हैं सुनो कलरिंग करो. पहले ग्रुप ऑफ बच्चों को बोलते हैं तुम कलरिंग करो, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे. दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को बोलते हैं तुम कलरिंग करो, और चुपचाप बाद में उनको रिवॉर्ड दे देते हैं. और अच्छा, नो मोर टेक्स्ट. हाँ, प्लीज पैनलिस्ट जितने भी, वैभव, आदर्श, रोहन, असीम, माज, प्लीज जस्ट कीप लुकिंग एट हु इज सेइंग व्हाट in terms of questions and whatnot, so we can take them. Please, yaar, हमारे पास we have 1 last hour left. Let's just go through this quickly in 15 minutes so we can take questions as much as we can. No, ठीक है. So लेपर, ग्रीन, निस्बेट इनवाइट अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स. पहली कंडीशन बच्चों को बोलते हैं कलर करो, रिवॉर्ड मिलेगा. दूसरी सिचुएशन बच्चों को बोलते हैं तुम कलर करो, दूसरी कंडीशन में एक दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को कलर करो और बाद में रिवॉर्ड चुपचाप पकड़ा देते हैं. और तीसरे ग्रुप वाले को बोलते हैं तुम बस कलर करो, कोई रिवॉर्ड नहीं देते. फिर 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं और उन्हें एक ओपन प्लेग्राउंड में डालते हैं जहां पे खिलौने हैं, ये है, वो हैं, और कलरिंग के लिए भी हैं, और देखते हैं किस ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं. एंड दे रियलाइज जो थर्ड ग्रुप है जहां पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, वहां बच्चे ज्यादा कलरिंग कर रहे हैं. क्योंकि बच्चे जब उस रूम में आते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हम वो करना चाहते हैं, इसमें हमें सबसे ज्यादा मजा आता है. हमें किस में मजा आता है? पिछली बार कलरिंग कर रहे थे. क्यों कर रहे थे कलरिंग? क्योंकि रिवॉर्ड मिला था. ओ, फिर कलरिंग में मजा नहीं आता. फिर थोड़ी वो तो हमने रिवॉर्ड के लिए किया. जैसे ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल. प्रखर फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी वर्कशॉप क्यों कर रहा है? कोई बाहर से क्या बोलेगा? क्योंकि प्रखर को साइकोलॉजी पढ़ानी है, उसको बड़ा इंटरेस्ट है.
दूसरा आदमी क्या बोलेगा? क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं, उसको पैसे की जरूरत होगी। समझ रहे हो? Do you understand? It is the same thing as you judge prakhar from the outside. Now prakhar judges himself the same way. Why am I doing fundamentals of psychology? One, either I like teaching psychology. Two, because I want to make money. Right? Either the situation demands it or it is my personality. And this is the same thing that is happening with those kids. The kids are like, हाँ मेरे reward मिल रहा है, और मेरे को reward मिल रहा है, तो I obviously don't like it that much. In this case, because I'm charging you, I might feel like I don't like psychology all that much. I just wanted to make that money. Suppose मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, मैं मुफ्त में पढ़ा रहा होता, फिर मैं अपने आप को क्या बोलता? मेरे को साइकोलॉजी से इतना प्यार है, मैं मुफ्त में भी पढ़ा दूंगा किसी को। आप समझ गए? नाउ यू अंडरस्टूड। सेम चीज उन बच्चों के साथ। बच्चों ने बोला हमने तो कलरिंग करी पिछली बार 2 घंटा, क्योंकि हमें कलरिंग करने का शौक है। कलरिंग करने लग गए। जिनको रिवॉर्ड नहीं मिला था, जिनको रिवॉर्ड मिला था, उन्होंने बोला अरे हमें तो रिवॉर्ड मिला था इसलिए कलरिंग कर रहे थे यार, हमें कलरिंग का शौक नहीं है, कुछ और खेलते हैं। ये है फंडा। क्लियर? ओके। Now we move on to cognitive psychology. And cognitive psychology, this revolution sort of happens post Alan Turing. And this is one of the funniest parts about human psychology. We can only think using the tools that we have. And I don't mean cognitive tools, I mean physical tools. We can only think with the tools that we have. And cognitive psychology, the idea कि कुछ amount of processing हो रही है दिमाग में। यार everybody please stop texting, my chat is hanging, I'll have to close the chat and फिर वो सब होगा। please stop texting, please let's get done in the next 15 minutes so we can take question answers properly आज, है ना? Anyway, the human mind is almost incapable। what the hell यार, फिर chat hang मार गई यार। ये क्या सीन है यार? तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या ये? बाकी पैनलिस्ट लोग? No, I can see the chat. What the hell? Anyway, right? So अभी तक इंसानों को अकर ही नहीं करा ये बात, जब तक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन नहीं आता साइकोलॉजी में, कि दिमाग में कुछ प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से एक्स हुआ तो दिमाग में एक्स की प्रोसेसिंग हुई और वहां से वाई निकला। दिस अकर्ड टू ह्यूमंस ओनली आफ्टर वी कम अप विद कंप्यूटर्स। And the reason why that was the case was because we looked at a computer. We designed it such that there is an input, there is a processing, there is an output. And we were like, what if our minds work like that? Oh, what? So we had this reverse realization after building a bloody machine. What if we are like that machine? And what you see with this whole, we live in a simulation argument that you are essentially a supercomputer, this, that, is an extension of this cognitive thought that we have in psychology. We are actually a computer. It's this Freudian extension of cognitive revolutions in psychology. And we came to this idea just right after Alan Turing created a computer, and that computer became mainstream. Mostly in the 70s, 80s, it really picked up. And now this is the dominant field of psychology, where we study how does the mind process. And we study stuff like, we'll study language acquire कैसे होती है, उसको mood के साथ कैसे जोड़ा जाता है, उसमें emotions कैसे डाले जाते हैं. There's a lot of research along. We'll study memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं। एपिसोडिक मेमोरीज, तुम्हारे साथ जो किस्से हुए, कहानियां हुई। सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरीज फैक्ट्स, तुम्हें कितने फैक्ट्स पता है, जैसे मेरे को सारे फैक्ट्स पता है, ये मेरी सिमेंटिक मेमोरी में है। हम ये सब अटेंड कर रहे हैं, ये हमारी एपिसोडिक मेमोरी बनेगी। पर बोलते कैसे हैं, ये मेरी प्रोसीजरल मेमोरी है। साइकिल कैसे चलाते हैं, मेरी प्रोसीजरल मेमोरी है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन सपोज टू बी अ प्रोसीजरल मेमोरी, कैसे बात करना है, वो सिमेंटिक मेमोरी की तरह काम नहीं कर सकता, जहां तुम्हें पता है यहाँ पे ये डाल दो, यहाँ पे ये डाल दो। If somebody's taken art of conversation, you know what I'm talking about, right? So that then we came up with ideas of metacognition, कि एक तो cognition है, मैंने एग्जाम दिया, मैंने सोच के एग्जाम दिया, अब मेरे को क्या लगता है मैंने कितना अच्छा एग्जाम दिया, that is metacognition. Thinking about thinking. I have a podcast called Thinking About Thinking also with this psychologist friend of mine back at Columbia. The idea is, okay, I think this, but am I right in thinking this? Am I wrong in thinking this? So metacognition is an entire field. We were originally going to cover some of it, but we had no time. Perception, if you've heard of Gestalt principles, कि अगर मैं ऐसे करूं तो empty space will make, you see that with logos and whatnot, जहां empty space छोड़ी होती है, and empty space में एक logo बना होता है. Or when you have like optical illusions such that things just connect to each other, Gestalt visual perception principles. And all this stuff we started studying. But the interesting part with cognitive psychology comes with
Well, it comes with Kahneman and Tversky. But before we go to Kahneman and Tversky and study cognitive distortions, we'll come a little pehle. We'll come to the year 1955, 57, 59. And we'll come to talk about this guy. His name was Leon Festinger. And Leon Festinger had touched upon cognitive psychology before cognitive psychology was a mainstream thing. And he came up with this beautiful idea called cognitive dissonance. And इस study को ध्यान से समझना. This is the study they ran, okay? This is the study that Festinger and his partner Carl Smith ran. इन्होंने एक एक करके लोग अंदर बुलाए. एक एक करके लोग अंदर बुलाए और उनसे महाबोरिंग काम करवाए. महाबोरिंग और बकवास मिनियल काम जो भी वो रहे हो उस टाइम में करवाए. दिस इज 1955. और जब ये लोग जाने लगे ना, जब ये लोग जाने लगे काम अपना खत्म करके, उन्होंने बोला सुन यार, बाहर तुम्हें वेटिंग रूम में ना अगला पार्टिसिपेंट मिलेगा, उसको अंदर भेज देना. और जब अंदर भेजने लगो ना, प्लीज उसको झूठ बोल देना कि काम बहुत इंटरेस्टिंग था. प्लीज उसको झूठ बोल देना काम बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड द डिफरेंस इन कंडीशन वाज, एक आदमी को बोला यार तू झूठ बोल देगा तो मैं तेरे को $20 दूंगा, और उस टाइम $20 काफी पैसे होते थे. और दूसरे आदमी को बोला यार तू अगर झूठ बोल देगा मैं तेरे को $1 दूंगा. वो जो बंदा बाहर वेटिंग रूम में बैठा है वो कन्फेडरेट है, वो मिला हुआ है. बट उसको ये सारे लोग बोरिंग काम करने के बाद बाहर जाते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, भाई बहुत मजे आए अंदर, बहुत मजे आए ब्रो, क्रेजी, आई हैड सो मच फन, आई कांट इवन टेल यू, माय माइंड इज इक्वल टू ब्लोन, इट वाज सो मच फन. उनमें से कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं उनकी जेब में $20 है, और जो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं उनकी जेब में $1 है. उनको नहीं पता एक्सपेरिमेंट उन पे हो रहा है. उनसे एंड में पूछते हैं उनसे एंड में पूछते हैं जो एक्चुअली वो बोरिंग टास्क करके गए, झूठ बोल के पैसे लेके गए, 1-2 हफ्ते बाद, तुम्हें कितना मजा आया वो काम करने में जब हमने तुम्हें बुलाया था, राइट? एंड जिन लोगों को $20 मिले थे, यूड एक्सपेक्ट कि वो बोलेंगे बहुत मजा आया, हमें $20 मिले एंड में उसके. दे फाउंड द जॉब फार मोर बोरिंग जिनको $1 मिला था. Because this is what the person who's going through that $1 logic is going through. ध्यान से सुनना. आदमी does boring work, thinks the work is boring, comes outside, now needs to convince somebody else the work is interesting. For the person who got $20, he thinks, अरे मेरे को $20 मिल रहे हैं झूठ बोलने के लिए यार, इसलिए काम बोरिंग ही था, पर मैंने बोला इसलिए कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे को $20 मिल रहे हैं. जिस आदमी को $1 मिल रहा है झूठ बोलने के लिए, वो कहता है अपने आप से मेरी झूठ की कीमत $1 है. हट, मेरे को एक्चुअली बहुत मजा आ रहा था, मेरे को जेन्युइनली मजा आ रहा था यार, तभी तो मैं बोल पाया पीछे वाले को कि मेरे को मजा आ रहा था. एंड विद दिस स्टडी दे आर कमिंग एट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस इज सिंपल. यू हैव एन अनकॉन्शियस नीड फॉर कंसिस्टेंसी बिटवीन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू. So if you think the job is boring, but you tell this other guy the job is very interesting, there is a dissonance, there is inconsistency, and you need to resolve it. You need to resolve it. Either you resolve it by now thinking, well, the work was super interesting, क्योंकि मेरा action कह रहा है the work was super interesting. Or you reframe the situation and be like, मैंने किसी वजह से झूठ बोला होगा. अब तो $1 के लिए थोड़ी झूठ बोलूंगा, इतना बिकाऊ थोड़ी हूं मैं, काम में मजा आ रहा था. And with this, what Festinger comes at is this internal unconscious need for consistency between our past, present, future, between circumstances. हमें consistency चाहिए. और इसको देखने का एक beautiful, बेहतरीन example देता हूं तुम्हें. Recently, a friend of mine broke up. And breakups are a great place to learn psychology. And he was talking to me. He's talking to me about his breakup. And he's constantly saying, I'm such a bad person, this, that, this, that. And it reminded me of one of the breakups I've had where I've constantly felt like I'm a bad person, this, that, this, that. And it made me wonder, because अब मैं अपने दोस्त को ये बोलते हुए देख रहा था, खुद तो अपने आप को तुम सेल्फ फ्लैजिलेट करते रहो, बोलते रहो मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, कोई नहीं देखता. तो तुम्हारा दोस्त बोलता है मैं घटिया आदमी हूँ, तुम्हारा मन करता है घटिया थोड़ी है, तू बढ़िया आदमी है. और हम लाइक ये कितनी अजीब बात है, खुद को घटिया बोल रहा है. कौन आदमी खुद को घटिया बोलता है? फिर मैंने अपने में झांक के देखा, मैंने बोला मैं भी खुद को घटिया बोलता हूँ. बैम, पहले मैंने उसमें देखा हो, फिर मैंने देखा अरे मैं भी तो यही करता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता अपने बारे में कुछ, मैं अपना बिहेवियर देखता हूँ. एनीवे, एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ये सीन क्या है. And the answer is very, very simple and obvious. ब्रेकअप हुआ है, अच्छा रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हुआ है, कचरा हुआ है, किसी की तो गलती होगी, तभी तो कुछ गलत हुआ है, किसी की तो गलती होगी.
और तुम मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तुम दूध से नहाए हुए बेहतरीन इंसान हो. This is what happens when a lot of guys and girls are entering into relationships, and they're entering into relationships with emotionally sensitive people, people who are very worried about getting into a relationship and such. कि ये तो एक सेंस में इमोशनल वर्जिन है सामने वाला इंसान, ये गलती नहीं कर सकता, इसको तो पता ही नहीं है, और तुम वो ही इमेज ब्रेकअप के बाद भी मेंटेन करना चाहते हो. कभी कभी क्या होता है, मेरे को वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बिफोर एंड आफ्टर माय ब्रेकअप. Before the breakup, relationship was great. After the breakup, I also want to think relationship was great. Well, sometimes it just was great, breakup हो गया किसी वजह से, right? और सामने वाला आदमी अगर तुम्हारे लिए दूध का धुला हुआ बहुत बेहतरीन इमोशनली वर्जिन आदमी है, जो कभी भी कोई घटिया काम करने की कोशिश नहीं करेगा, लड़का या लड़की, तो फिर एक इंसान को तो गलत होना ही पड़ेगा ना. अब वो इंसान कौन बचा? वो इंसान तुम बचे. क्योंकि तुम ये बोल कैसे सकते हो कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं, वो भी बहुत बढ़िया थी, पर फिर भी कचरा ब्रेकअप हो गया. क्या क्यों हुआ फिर कचरा ब्रेकअप? एक्चुअली मैंने गलती करी थी, मैं घटिया इंसान हूं, या उसने गलती करी थी, वो घटिया इंसान है. दैट्स इट. We started with this earlier. Somebody asked me about we are ashamed of our bodies, and I told you it's the same reason. It's the same reason. If you want to say being fat is okay for me, you have to say being fat is okay. That is why people who are for body positivity and against fat shaming is like being fat is okay. Because they cannot just make a personal argument. मेरे लिए exception क्यों है? बाकियों के लिए क्यों नहीं है? सबके लिए being fat okay होगा फिर तो. This consistency is the reason why we do so much of what we do, what we tell ourselves. And Festinger figured it out. For instance, and I'm not saying this is a tested study, but I'm just giving you an example. अगर तुम किसी के साथ कुछ खाने जा रहे हो ना, तुम बोल तू क्या खाएगा? Suppose जैसे मैं पास्ता खाऊंगा. Check what they actually order from the menu. Most likely they'll order a pasta. Or another interesting example. भाई मैं सिगरेट नहीं पीता. भाई मैं सिगरेट और दारू मैं नहीं पीता. रात को बैठ के सिगरेट दारू पी रहा है. अपने आप से पूछता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो मैं पीता हूं कि नहीं पीता हूं. या फिर एक और चीज, अ मोर फाइन एग्जांपल में भी, तुम किसी स्मोकर से पूछना सिगरेट पीना सेहत के लिए बुरा होता है, और उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखना, क्योंकि हाँ बुरा होता है, मैं फिर भी पीता हूं, बट ये बात कैसे मान लूं, मैं अपना ध्यान नहीं रखता. कंसिस्टेंसी चाहिए ना. अगर सिगरेट बुरी है तो क्यों पीता हूं? पर सच ये है, मेरे को पता है सिगरेट बुरी है, तो जब तुम मेरे से बोलते हो सिगरेट बुरी है कि अच्छी है, मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे को वो सच फेस करना पड़ेगा. You want consistency between your thoughts and your actions. And so notice, what do you tell yourself in your thoughts? You'll find yourself doing that on the outside. Here is how I ran this experiment. For a very long time, when I'd hang around Colombia, a lot of people would ask me how I was doing. For a very long time, I'd just give whatever conventional example. But after a certain while, I just started saying, chalta hai type. Chal rahi hai, cut rahi hai. And then I found my life became significantly less happier for a while. Like I ran this experiment for a month, and then I changed. Personally experiment run kara tha. Then I was like, every time somebody asks, I'd be like, bro, life's bloody amazing. And I became a little happier because of that. So just by answering a question like that, or that experiment, if you smile, you automatically feel lighter, happier, because your brain looks at you, you're like, oh, I'm smiling. That must mean I am happy. Consistency. Same as what Bem is saying. You smile, you look at yourself, you're like, I'm smiling. That must mean I'm happy. That's it. That's what Festinger and Bem are coming at. And here is this very interesting cartoon. I need to show you how Ben and Festinger are related. So read this cartoon. Tell me if you understand it. It's a beautiful cartoon. It just adds those two things together. All right. I'm sorry, I have to cut this short very quickly so that we can move forward and
and then get it done with. तुम आराम से इसको पढ़ते रहना, बाद में कोई लोड ही नहीं है. But okay, now we'll very quickly go over group psychology. Oh, sorry. Oh my God, there is errors in thinking still left. My God. रुको. हर बार लगता है 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, नहीं होता. But okay, we'll go over Kahneman and Tversky's research, right? And the first one of them is called, and actually this is not Kahneman and Tversky, fundamental attribution error is a separately studied phenomena. And I wanted to go over this stuff in group psychology quickly enough, just to give you a hint of how bloody messed up your processing is, right? So fundamental attribution error is, जो मेरे साथ सही होता है बुरा होता है वो मेरी वजह से होता है, जो किसी और के साथ सही होता है बुरा होता है वो सिचुएशन की वजह से. मैं एग्जाम में पास हो गया, मैं फोड़ू, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं बेवकूफ हूं. वो एग्जाम में पास हो गया, किस्मत थी. वो एग्जाम में फेल हो गया, किस्मत थी. दिन खराब था, दिन अच्छा था. तुम्हारा दोस्त बोलता है यार आज बहुत बुरा हुआ है, यार आज ये हो गया वो गया. कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, दिन खराब था. तुम्हारे साथ बुरा हो गया, मैं बेवकूफ हूं क्या? सिंपल. फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर सेज यू ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट टू योरसेल्फ your success and failures, and to situation everybody else's success and failures. Simple. You'll find, and it's not universally 100% valid or not always going to happen, generally going to happen. The other is prospect theory, and this is brilliant. This is Kahneman and Tversky. These were psychologists who won a Nobel Prize for economics because this is what they figured out. This is something economists never figured out. Economists क्या कहते हैं? तुम पानी पीते जाओ, एक गिलास की मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, दूसरे गिलास की MU 4 है, तीसरे गिलास की 2 है, चौथे गिलास की 1 है, फाइनली एक गिलास की 0 है. तो टोटल अगर तुम ऐड करो 5 + 4 + 2 + 1, दैट इज 6, 11, 12. 5 ग्लास की मार्जिनल यूटिलिटी 12 है. अब मैं उस 12वें में से अगर तीसरा ग्लास निकाल दूं जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी 2 थी, तो कितनी MU बची? यू बी लाइक 10 मार्जिनल यूटिलिटी बची. बट Kahneman's like no. Kahneman's like we feel losses bigger than we value gains. So जब तुम मेरे को 5 चॉकलेट देके एक चॉकलेट ले लेते हो, इट हर्ट्स अ लॉट मोर देन जब तुम सिर्फ 4 चॉकलेट देते हो. आई फील लेस सेटिस्फाइड. क्योंकि जब तुमने 5 चॉकलेट दे दी एक बार के लिए, मैं नॉर्मलाइज हो गया. अच्छा ये मेरा बेस पॉइंट है, उसमें से फिर तुमने एक ले ली. तू मेरा क्यों ले रहा है? तेरी थी कब? तो पिछले 5 सेकंड के लिए. उतने में मैं एडजस्ट मार गया. This S-shaped graph is exactly representing that. $50 gain direction में, $50 life loss direction में. $50 gain direction में देखो खुशी कितनी है, और $50 loss direction में देखो खुशी कितनी है. गम कितना है? गम हमेशा ज्यादा है सेम अमाउंट पे. And the funny part, the kicker that nobody talks about with prospect theory is this point right here, 0. ये 0. This 0, it readjusts very quickly. We adapt very quickly to our base state. Very, very quickly to our base state. तो 5 चॉकलेट मिल गई, चाहे 2 मिनट के लिए मेरे हाथ में थी, अब वो मेरी हो गई है. अब मैं ये नहीं देख रहा 5 चॉकलेट का गेन कितना है इस ग्राफ पे. अब मैं देख रहा हूं 5 चॉकलेट यहां पे है, 1 चॉकलेट का लॉस है ये. तो मेरे को ओरिजिनली मेरे को खुशी हुई थी इतनी, और 1 चॉकलेट लूज करने का गम हो रहा है इतना. This is called prospect theory. This is Kahneman and Tversky. Gains feel bigger than losses, and you readjust very quickly to gains and losses. So they become 0 very quickly for you. Right? And the funny part is, evolutionarily, we are programmed to be more susceptible to losses because one loss can kill you, but many gains may still not be able to keep you alive, and so on. So it matches with evolutionary thought. The third one is called anchoring and adjustment, and this is the reason you see 500 कट के 200 लिखा होता है या 300 लिखा होता है. Because, and this is something that happens in negotiations all the time. You learn this when you start negotiating for your salary, this that. एक नंबर फेंका जाएगा, और उस नंबर का पर्पस ये नहीं है कि तुम उस नंबर पे हाँ बोलो, या तुमसे फिकवाया जाएगा नंबर. उसका पर्पस ये नहीं है कि सामने वाला उस पे हाँ बोले. उस नंबर का पर्पस ये है, हमें पता लग गया इसकी रेंज क्या है, अब इससे ±10-15% जाया जा सकता है. जब एक मग पे $1000 लिखा काट के $300 करा होता है ना, तुम पता है क्या बोलते हो? अच्छा इसकी वैल्यू $1000 है, 300 में मिल रहा है. एज अपोज टू अगर सिर्फ $300 का लिखा, $300 का मग. हमें चीजों की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती. एक 55 लीटर का फ्रिज कितने का आता है तुम्हें नहीं पता. 55 लीटर के पता नहीं फ्रिज होते भी है कि नहीं, आई डोंट नो. एक 2 लीटर का एसी कितने का आता है तुम्हें नहीं पता, आई डोंट इवन नो. बट मार्केटर्स क्या कहते हैं, हम लोगों को ना एक एस्टिमेट देंगे जो बहुत बड़ा होगा, और उसको काट के बोलेंगे इतने का है. I don't know if we're still doing this with Art of Conversation, but I've always insisted we never do this. My product's priced at 2500. I'm not going to play around. पता नहीं if that still happens. एक टाइम पे बहुत पहले कभी होता था. I don't look into it now. But this is true. The point is, and this is how we ran this experiment in class.
वो तो खैर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट था, क्लास में तो प्राइम करा था हमें एक नंबर के साथ, where if I give you a number, you cannot think very far away from that number. Happens in negotiations all the time. So when somebody's like, what is the ballpark figure you're expecting? First, try and never answer. I never answer. Like, what is the ballpark figure you are expecting? Because as soon as they're like, 1 lakh rupees, I'm like, fuck no, not going to work. So I can say no immediately and now give a better figure. I know where they are anchored. क्योंकि जो भी आदमी जहां एंकर्ड होगा ना, उससे थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करेगा. एंकर सही सेट करना बहुत जरूरी है. समझ रहे हो? There was a fake timer of 12 hours as well. Yeah, bro, I don't know. Hey, if we still do that, हटा दो. अब तो इन सबको हमने राज बता दिए अपने. अब नहीं कर सकते हम ये. But in any case, it's just so boring. But you know what is so funny? All of this advertising, marketing, और ये जो सारा psychology behind selling जो है ना, the guy who came up with it, Edward Bernays, was Freud's nephew. And then this is the most beautiful bloody part. Okay, this is by far the most beautiful thing. It's called discounting. And listen to this carefully. This is the reason you procrastinate. This is the reason you have no motivation. This is the bloody reason you don't do shit about your life. Okay, follow me along carefully. Follow me along carefully. Uttri. Discounting, basically what discounting says, what is here and now is more valuable, is more real than what is not here and now. Simple. अब केक यहां पे है, 6-पैक एब्स तो फ्यूचर में है ना, तो केक खा लेंगे. और ये चीज सिर्फ टाइम और प्लेस के साथ नहीं, हर सेंस में जो चीज ज्यादा डिस्टेंट है, जो चीज इमेजिन करने में ज्यादा हार्ड है, उसके लिए डिसीजन लेना ज्यादा मुश्किल है. सो इफ आई टेल यू आज 100 रुपए ले लो, या 5 दिन बाद आके 200 रुपए ले लेना, तुम बोलोगे भाई आज 100 रुपए दे दे, 5 दिन बाद का क्या पता. बट अगर मैं बोलूं आज 2 जूते खा ले, या 5 दिन बाद के बाद 4 जूते खा ले, तो बोलेगा 5 दिन बाद मारियो भाई, आज नहीं पिटना. सिंपल. दैट्स व्हाट यू वुड प्रेफर. यू विल लाइक 5 दिन बाद की बात देखेंगे यार, क्या करना है अभी, क्या करना है देख के. Simple. This is how they study discounting. But it's not just that. If I tell you, bro, कैलिफोर्निया में भूकंप आ जाएगा, you'd be like, तो लोग मर जाएंगे. तो मैं बोलूंगा भाई उड़ीसा में बाढ़ आने वाली है, क्या बात कर रहा है. भाई दिल्ली में बाढ़ आने, क्या बात कर रहा है. The closer it is to you, the more real it is. And this is what happens with all your long-term goals. This is what happens with bloody motivation. You want to get X done, but you don't have clarity about X. You don't know what X looks like. It's so far away in your head. It's called low construal. कि बहुत लो लेवल की इमेजिनेशन है, बहुत ही एक मैं बोलूंगा ग्रेनी इमेज है. हाई डेफिनेशन इमेज नहीं है फ्यूचर की, ग्रेनी इमेज है. कुछ पता है, एम्बिगुअस है. और क्लैरिटी और फिक्स्ड होने में फर्क है. तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो सकता है, फ्यूचर का प्लान, बट कितना क्लियर है. तुम अपने आप को जब इमेजिन करते हो आज से 10 साल के बाद, कितनी क्लियर है वो इमेज, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू विल वर्क फॉर इट. सो व्हेन आई स्टार्टेड मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन, दैट वाज द हाइपोथेसिस आई वाज वर्किंग ऑन, वाज डिस्काउंटिंग. I was working on something called high level construal and low level construal, and it's called construal level theory in discounting, which is the higher construal that you have for a future event, the more likely you are to value it. For a future event, for a far event, anything, if you have high construal, you will value it more. Things that are near to you, you automatically have high construal. Things that are near to you, you automatically have high construal. तुम उसको देख सकते हो, तुम उसको बिल्कुल here and now है, रियलाइज कर सकते हो, तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे बारे में है, तुम महसूस कर सकते हो. जो चीज दूर है, जैसे हम कहते हैं ना, so many people say this about like cancer, or for that matter, like तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे साथ क्यों होगा, and then it happens to you or in your family. You never think it will happen to you because low level construal. You never imagine it, you never prepare for it, you never do anything about it. Once it is high level construal, you start doing shit about it. You start reading and learning and so on and so forth. There is a very famous example I've started to give about why you don't work for shit. I say, अगर तुम्हारे पापा बीमार होते, तुम दवाई ढूंढने के लिए फोन करते ना यहाँ वहाँ,
तब तो कोई नहीं रोकता, तब तो मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहे होते तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने हो रहा है, जो हो रहा है क्लियर है, हाई लेवल कंस्ट्रूअल है, मेरे पापा को कुछ हो जाएगा अगर दवाई नहीं मिली। बट अपना फ्यूचर संभालना, अरे वो तो देख लेंगे यार, वो तो बाद में भी हो जाएगा। क्योंकि वहां पे द इमेज इज सो ब्लर ऑफ द फ्यूचर, द इमेज इज सो ब्लर। The idea is motivation is not made up of तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत पावरफुल हो, या मेडिटेट करो. That's not what motivation is made out of. Motivation is made out of clarity. Once you are clear about something, you will make a better decision. And that is what you learn as you grow up. When you become more and more independent in life, you realize, listen, here is clarity for you. Listen, if I don't make the right decision, my kids, my family, people around me, my friends will suffer. My team will suffer. I have to show up and do what I have to do. There is no excuses. While you're living with your parents, there is this false sense of security. So you're never responsible for yourself. You never take care of yourself. I got so much shit this one time on Instagram for saying, after everything, family still matters, this, that, and people were like, wrong. And I'm like, you stupid idiots. I'm the first person who'll say, fuck your family off. Stay away from your family, be an independent person. But still, I'll go on to say, even beyond that, family is one of the most important things in your life. No matter how toxic your family is, wait till somebody falls sick. Wait till somebody gets cancer and you'll know. Not wishing that upon somebody, but just saying. It automatically starts making sense. The point being, if things are clearer to you, if things are near to you, if you can imagine them, you can work towards them and get them done. And this is the philosophical lesson from discounting. What discounting goes on to show is, if spatially things are removed, if they're not in the same space, if temporally things are removed, and if in an abstract sense things are removed. Abstract sense में यानी भाई alien आ जाएंगे, far off concept, हाँ alien आ जाएंगे, versus भाई सारे गीदड़ आके मार जाएंगे तेरे को. गीदड़ as in गीदड़ I think हाइना होते हैं ना, हाँ नहीं वो लकड़ भग्गे होते हैं, नहीं पता नहीं, anyway, या चल तेरे को crocodiles आके खा जाएंगे. Crocodiles is abstract, closer than aliens, so much far away. Possibly the reason why we imagine aliens as almost humanoid, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर is, or for that matter God as almost like a person, is low level construal, not high level construal. So that is discounting, and bloody genius for coming up with that. But with group psychology, very quickly, because we're already hitting 10, there is three things I want you to know. And all these three things are represented very well here with cartoons. There is groupthink, there is group polarization, and there is in-group, out-group. You probably have heard of all of this. The purpose of me teaching you group psychology to whatever extent we are doing here is for you to understand how imperfect and stupid groups are. People have this thing, it's called diffusion of responsibility. एक आदमी बोलता है हम ये करेंगे, बाकी लोग कहते हैं भाई ये सब देख रहे होंगे ना हम क्या कर रहे हैं. देखा नहीं कभी कितनी बार ऐसा होता है, तुम अकेले दारू पी के गाड़ी नहीं चढ़ाओगे, कभी भी चलाओगे कि भाई घर पे बैठे हैं 2 बियर पी, चल गाड़ी चलाने चलते हैं. 5 दोस्त बैठे हो दारू पी रहे हो. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मैंने बचपन में एक बार मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया था, जम्मू कश्मीर की. ये प्लान था हमारा, थोड़ी दारू पी रखी थी हमने, दोस्तों में प्लान बनता चला गया, भाई जम्मू चलते हैं इसी रात ट्रेन में बैठ के. गाड़ी ड्राइव करते हुए फरीदाबाद से दिल्ली पहुंच गए. क्यों? क्योंकि एक ने बोला भाई जम्मू चलते हैं, सबने बोला हाँ भाई हाँ चलते हैं भाई चलते हैं. सारे एक्साइट हो गए. आई वाज मे बी 18-19. गाड़ी में बैठ के जा रहे रात को 12 बजे, पता भी नहीं है कोई ट्रेन है भी कि नहीं है. रेलवे स्टेशन में जाएंगे, ट्रेन में बैठ के जम्मू जा रहे हैं. एंड हाफवे थ्रू आई जस्ट पुल अराउंड, आई एम लाइक हम क्या कर रहे हैं, लाइक व्हाट द हेल आर वी डूइंग. क्योंकि मेरे सारे दोस्त सो गए गाड़ी में और मैं फाइनली अकेला हुआ, उस ग्रुप थिंग से निकला. एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये, what the hell is happening, why are we here? I turned the car around, I drove back, I'm like all of us are dumb idiots. The other thing is group polarization, that it's not just that everybody is going to be like yes we should do this, that they're going to get more extreme. And this is the whole thing that happens with like Twitter echo chambers. You just follow tech people, you just follow like political people, and you eventually start speaking that language and you get further along that. Like एक 19 साल का बच्चा जो भी कॉलेज भी नहीं खत्म किया है, is talking about products as if उसको ही पता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, और उसको ही पता है सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और उसको ही पता है बिटकॉइन के सेंस में. देखो, बिटकॉइन started off as an alternate for a currency. Now Bitcoin is God now, or at least it was for a short while before should just फिर वो bear run में चला गया. For a short while, with Balaji S in our back, we will claim Bitcoin is God. It went from being an alternate currency that may or may not work. We don't know. We don't have a proof of concept as far as, running it for transactions is concerned, because it takes too much time. The fee is too high, blah, 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 blah. All of that got swept aside.
सब ग्रुप में, हाँ हाँ हाँ, यस, हॉडल 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 के चक्कर में भाई पता नहीं कितनों के पैसे डूब गए, कितनों के पैसे बन गए. And this is the same stuff that happens in, what do you think, like how is it that पॉलिटिकल पार्टीज वो उनके आइडियाज को लेके इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, टीएमसी वाले बीजेपी वालों को मार रहे हैं, बीजेपी वाले टीएमसी वालों को मार रहे हैं, फलाना ढिमका XYZ ABC. वो जब रूम में बैठते हैं ना, तो उनके हाँ हाँ सिर्फ हाँ हाँ नहीं होते, हाँ 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 हाँ, दे मूव टुवर्ड्स अ पोलराइज्ड एक्सटेंट. ग्रुप्स आर, with every new member in the group, reduce the collective IQ by 7 points. That's just my formula. And this is the most beautiful thing you should see. This is what in-group, out-group looks like. And the general idea is, there is an us versus them. किसी ने सुना है Pink Floyd का us versus them गाना? There is an us versus them song. And we always are operating in us versus them. You cannot play that game where everybody's us. Believe me, you cannot play that game where everybody's us. The only way all of Earth is ever going to come together as brothers holding arms, जैसे हमें स्कूल में drawing कराते हैं, is when aliens come. Because there is another them now. There, you cannot have everybody be us. That's a very stupid, naive, immature thought that an immature person has. And you'll find this on Twitter with people, because usme the appearance of saying hum sab ek kyun nahi ho jate is very beautiful, but it's practically not possible. And this is what the us versus them idea looks like. And think about it, because you'll see this with politics, you'll see this with countries, you'll see this with, imagine our blessed homeland के ऊपर India लिखा है, their barbarous wastes के ऊपर पाकिस्तान लिखा है. And go over this and then switch sides and see यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है और यहाँ इंडिया लिखा है. इंडियंस पाकिस्तानी के बारे में वही सोचते हैं जो पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में सोचते हैं. इंडियंस अपने बारे में वही सोचते हैं जो पाकिस्तानी अपने बारे में सोचते हैं. बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के बारे में वही सोचते हैं जो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के बारे में सोचते हैं. बीजेपी वाले अपने बारे में वही सोचते हैं जो कांग्रेस वाले अपने बारे में सोचते हैं. सिंपल. हम, हमारा ग्लोरियस लीडर, हमारा बहुत महान देश, हमारी बहुत ही बढ़िया पॉपुलेशन और हमारे हीरोज, उनके कुत्ते इन्वेडर्स, उनके बिल्कुल सैवेज बैकवर्ड लोग, उनकी पुराने ख्याल के सुपरस्टिशन और उनके विकेट डेस्पॉट. मुसलमान बोलते हैं हिंदू चूतिए हैं क्योंकि वो आइडल वर्शिप करते हैं, हिंदू बोलते हैं मुसलमान चूतिए हैं फॉर XYZ रीजन. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट एवर. सो आई मीन बिफोर या लिबरल्स, ओ लिबरल्स ऐसे होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं, दिस इज लिटरली इट. दिस इज लिटरली इट. ऑलवेज. And the reason why I wanted to go over just 3 of these is because it is so important that in your groups you have people who actively disagree with you. Varna your thinking's down the drain. If you cannot hold an interaction with somebody who's like, I disagree with everything you say, and you cannot remain friends with them, what are you doing? Most of my friends agree with nothing I have to say. My parents don't agree with the shit I have to say. Like, I mean, I'm not saying entirely, but stuff. But so what? I love it. I was recently talking about this guy. His name's Hassan Abi. And Hassan Abi is a YouTuber, Twitch streamer with extremely leftist views. And people told me later on he has extremely leftist views. Frankly, I don't even care about his views. I like his style. I'm glad. मैं तो in fact add करता हूँ. This I do every time I'm too inclined to a political ideology. I follow people from the other. When I'm sick of hearing Bharat Mahan, I'll go follow a lot of Pakistani people on my socials. I'll be like, wo kya keh rahe hain yaar? Afghanistani people, what are they saying? And then I'll follow random people in say Turkey and Lebanon to see what they say about themselves. And you realize we're all talking about ourselves in the same way and about the other in this way. Yeah, he's progressive, whatever. Hassan Abi, what I like about him is he doesn't take shit seriously. And I love that about him. I don't have to care about what his political views are. In fact, let him get into my mind, because I've let Joe Rogan get into my mind too. And I've let Ben Shapiro, and I've let Jordan Peterson, and I've let Sam Harris. So why not Hassan Abi? I need somebody who disagrees with this group who's always like, progressivism's all bad. I need somebody, a good hero from the left side. Why not him? Or why not Sam Cedar? I mean, there's problems with Sam Cedar also, but my point is, this happens to you. This will happen to you so often. This will happen to you so often as you grow up. You'll get tied up to some political beliefs, some cultural beliefs, some religious beliefs. You will. And that's great. Find your identity. That's no problem. But always remember, you are dumb in a group. You may think you're very smart. If you're a leftist, go to Op India, read their articles. You'll be like, what garbage is that? If you're a rightist, go to some left-leaning like News Laundry and read their articles. You'll be like, what garbage is that? But to the lefty, News Laundry will make sense. To the righty, Op India will make sense. That's it. So if I'm feeling righty right now, I'll go read News Laundry also.
I'll be like, कोई बात नहीं, मैं disagree करता हूँ, मेरे को garbage लगता है, but I let it settle in. That voice of disagreement is important. You remember Solomon Ash के experiment में, as soon as there was another person who was willing to tell the truth, what did it do to the last person? It made that person more likely to tell their truth. And that is why it's important. Surround yourself with a bunch of people that break this in-group vibe, that constantly challenge you. Okay, I hear some people saying they disagree with me. Listen, I don't care. Right now is not the place where you need to disagree with me on anything at all. Please, no political opinions. That's not the purpose of why I'm discussing it here. Please be little more mature than this. I was trying to make an intellectual point. If it doesn't suit you because your politics gets triggered, nobody can help nothing, no? And with that, we are at the end of session 2. We'll do a question answer thing. अब जो लोग बोलते हैं ना, एक बंदा था मेरे YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे, ही वाज लाइक, ये तो सिर्फ पॉप साइकोलॉजी पढ़ाएगा, मैं एक साइकोलॉजी एकेडमिक हूं. और जो वो लोग बोलते हैं ना, तू साइंस नहीं पढ़ा सकता, मेरे को पता है कितने लोगों ने आके बोला, बच्चों को सिर्फ सेल्फ हेल्प चाहिए ब्रो, बच्चों को सेल्फ हेल्प दियो, सेल्फ हेल्प ये वो, इनको बस ये है कि इनको लाइफ में, तुम्हें पता है, यू शुड नो दिस बाय द वे, दिस इज व्हाट लाइक अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स विल से अबाउट ऑडियंसेस, एंड आई डोंट गेट इट. And what is really happening is they're having to do childish content. And so if they're having to do childish content, according to Festinger, either they are childish or the audience is stupid. And so they have to say the audience is stupid because they can't say they're stupid. There's a lot of creators, by the way, right? And I was like, no, I'm going to teach science. I'm going to see what happens. Divyanshu and I had this huge meeting beforehand to how do we position this? How do we create course content? And I was like, I want to stick to science. And this is what happens when you teach somebody science properly. So fuck yeah, man. You guys loving it? Hell yeah. This is a proper bloody revolution we can have in the Indian intellectual space. Where somebody decided they just wanted to pass on the knowledge they have, and a bunch of people got together. They were like, hell yeah, we'll get that knowledge. And that somebody put hard work and the other people came in committedly, and all of us sat down as a group and we made magic happen.